भाई आते ही ये लिखता है सीरियसली। आज ये वाला स्ट्रीम होगा बिफोर देयर डेथ्स। आज ये वाला मिशन करूंगा ना बिफोर देयर डेथ्स। सही बता तो टेलीपोर्ट ओह इधर इधर ही है। एक मिनट जरा इधर का वो टीटी अनलॉक करवा दूं मैं। पता है सिजुको व्हाट्सअप वेलकम टू स्ट्रीम कैसे हो व्हाट्सअप। चलो ये वाला इधर का टीपी अनलॉक हो गया सारे। ये इवेंट तो चला गया खत्म। कल आने परसों अपडेट है इस गेम का। और कैसा गया तुम्हारा आज का एग्जाम। आज एग्जाम देने गए थे ना। सब बढ़िया था। वाला बात है मेरे पास स्किप बटन तो है बट आई विल नॉट स्किप द स्टोरी। साइडी हेलो। Your surprised expression is just like what the memories recorded. आज का दिन ही खराब है। कोई ना वेट कर जाना ना। देखो दिवाली में अगर तुम वेट करते तुम क्या पता जितने में अभी चल रहा है उसमें और ज्यादा सेल मिल जाए। मैंने वेट किया था यार मैंने अपना करीब 6-7 महीना वेट किया था अपने नया मोबाइल के लिए। मैं ग्राफिक अपना पीसी का ग्राफिक कार्ड के लिए 1 साल वेट किया था बस एक ग्राफिक कार्ड के लिए। Rather than knowing you, it might be better described as I remember you. It's me, friend. Don't you recognize me? Or did I really आराम से change वेट that करो। much? देखो दिवाली में सही बताओ तो मैं बोलूँ तो दिवाली में सबसे ज्यादा सेल मिलता है। अगर तुम अभी जो मोबाइल 29,000 का देख रहे हो वो हो सकता है कि बस दे देना प्रॉमिस तो। क्या ही बोले आप वो तुम्हारे पापा के ऊपर डिपेंड करता है ना। Maybe I'm both? Just kidding. If I had to choose, then I'm probably closer to the latter. It's pretty unbelievable for me too. It's like I had a long dream. Cyrene's memories and Mem's memories, they're all tangled together. But when I woke up, there were only broken fragments left. इस बार पूरा करूँगा जब फर्स्ट दिन आएगा सुबह I के can't 8 बजे remember what वाला happened in पोस्ट those कर 30 दूँगा। million cycles, but I remember what you did for this world. ये सारे दोस्तों ने ले लिया बस मैं ही हुआ। Like, आएगा didn't टेंशन you मत wish for करो me to वेट turn करो आ into a pretty जाएगा girl back at the grove? बस थोड़ा सा और। Finish my wish. Yep. Isn't it amazing? It's like a seed finally grew up and became a flower. And I'm definitely as cute as a flower now. I know. There's so much I want to say, but बड़ी unfortunately, कैसे होगा साले this isn't छोटी the time to reminisce. हाँ ऐसे खाएगी क्यों पड़ा हूँ। With the memories of the previous flame chase still intact, we've returned to this place at the beginning of time, so we can carry out our promise to Finan. The descent of Iron Tune may be looming over the horizon, but we still have a chance to change everything. Ide Silicii is so quiet. In Cyrene's memories, she always sits alone by the lake, gently swaying on the swing, like she's waiting for someone. ये तो अभी जो मैं स्टोरी कर रहा हूँ इस HSR का ये एक्चुअली अभी तुम्हारा पास्ट बोलेगा मरने से पहले सब।
It sounds weird, doesn't it? It's something that happened to me, but I'm talking as if I'm an observer. But that's just what those memories are like. Vague and unclear. As if ये encased बहुत in बार बार thick क्यों ice. आता है मेरे को टैग क्यों The करता only रहता things I है remember Why? are the days I spent with you. Emphorius will fall into an ending of destruction after the next Era Nova. But those stories went out of fashion ages ago. In a proper romantic epic, the hero's supposed to foil the villain's plot. That's right. He's the mastermind who's trying to control everything. How unforgivable, but I still feel a bit anxious. Lygus chose to walk into the spotlight and reveal everything, which means he still thinks the current situation is under his control. Maybe he still has an ace up his sleeve. Think about it. Even the name Lycurgus is a fake one. We have no idea who or what he really is. Which means it's probably time to borrow that treasure you're carrying, friend. Yep, that Intellitron friend did say, when required, it can also serve as a bridge for communications between the internal and external world. ID Silicii is a little village enclosed by time. We might be able to contact the outside world from here. Why don't we give it a try? We should at least tell our friends from beyond the sky that you're still in one piece. One Piece invention. Firstly, we need to find a well-hidden spot. It's super quiet here. Sounds can't get in or out. Back in Cyrene's memories, this room was her secret base. No one noticed her practicing Orynyx's prayer here, or trying to speak with the gods in... But today's different, isn't it? We aren't trying to contact unreachable gods, but humans from other worlds. Real people. I'm prepared to witness that miracle, friend. The way Cyrene talks is so similar to Mem. I have so many questions. I'm also worried about how Dawn Hung and March 7th Don't worry, March 7 आएगा और पूरी Emphorius की अम्मा बहन करके चला जाएगा. Function normally, because I really need answers. But March 7 cute था यार. Signal strength 14.8%. Dialogue window 16 minutes 22 seconds. Prerequisite: no external interference. We are very glad to learn that you're safe. Pity. Now's not the time to celebrate. Having two geniuses standing here means you are in big trouble. Yes, we know that. Listen up, little one. The Destruction's eyes are gazing upon this place. No, I'm not joking, and no, it's not Droidhead. It's the real Nanook. Time is running out, so I'll explain in terms you understand. This world, Amphorius, is in fact a testing ground, where the Lord Ravager, Iron Tomb, evolves through self-extrapolation. Hiding in this segmentum, unknown to other life forms, it has endlessly repeated the process of Era Nova, seeking a solution that could obliterate the erudition. Okay. For some reason, the experiment entered a prolonged state of stagnation. However, it has now restarted. Prediction: if effective intervention is not performed, Iron Tomb will complete its self-coronation in 14 system hours and initiate its plan to destroy the entire path of erudition. Okay. How will destroy the The erudition? possibilities are endless. Breaking down interstellar communications, destroying the synesthesia beacons, returning cosmic civilizations to the Dark Ages, or even starting the third anti-organic war. Any of it would be able to bring the cosmos to its knees. Simply put, it will tilt all sciences and technologies towards the destruction. And since Nanook glanced at this place, it means they are being dead serious. Oye, HSR खेल रहा हूँ. Based on info provided by the IPC, Iron Tomb probably isn't like Selenova or Zephyro, who are overlords ascended from human beings. Instead, Iron Tomb is an algorithmic sequence. It can be anywhere,
as long as there is a receptacle for its calculation. The version of Iron Tomb hiding in Amphorius is its source code, and this scepter is its incubator. Yep. Think of it as the program having reached 99.98% completion already. And then it's over. Something in the shadows has been driving everything forward. It's the observer named Lygus. Speculation, he's the scepter system's administrator. मतलब क्या तुमको आईडी चाहिए किस चीज knowledge की? singularity. I don't know why he wants to do it, but he'll remove interferences at any cost. You're the only कोलंबिया का variable शॉट in कैसे this बना? world, अच्छा वो and you're आँख the में only कोई thing he fears. So listen closely, little one. The speed of time is different in Amphorius compared to the outside. Destruction is just about to arrive. अपडेट आ गया You क्या? can नहीं नहीं still अपडेट नहीं play आया, अपडेट 2 दिन बाद. Deliverer one last time. अच्छा अच्छा. The cycles have already been broken. You've entered what is theoretically the last cycle Amphorius will ever be able to run. An Iron Tomb will break out of its prison as soon as the process of Genesis is triggered. But now there's an abnormality within the experiment. You know what I'm talking about. One of the model's 12 factors. That is one of the 12 demigods. Destroyed himself using the power of destruction. Finance signal disappeared from the cycles the moment Nanook cast their gaze this way. That means World Bearing's computational logic is currently flawed and bugged. Yet it's the factor directly related to the process of Genesis. That old Intellitron will definitely do all he can to debug this error. So you have to take this chance to claim Kepfali's core flame. But don't let him have his way. The key to suppressing Iron Tomb lies in whether he can rewrite the purpose of Era Nova. There's one more preparation we must make. Lygus's behavior has been quite abnormal. He's never interfered in the actions of Titans or the demigods throughout the whole deduction. The scepter has an extremely strict autonomous protocol, restricting even its administrator. In Amphorius, this ultimate protocol goes by another name, the Law Titan. The Law Titan, Chalaton. Law. They are the rules that restrain all things in Amphorius. And it was भाई the एम्फोरियस की returned at बड़ी the very गाफ beginning बड़ी of the बड़ी है last भाई, flame chase मानना तो journey. पड़ेगा. ऐसा चुदा है ना ये प्लैनेट. Why do you have another little pink one next to you? Her path chart is... Is there something wrong अच्छा with me? जो एवरनाइट है वो क्या पूरा क्या मतलब एम्फोरियस को रजिस्टर कर देगा क्या? Light calendar 3960. Month of balance. वो तो मेनली दोनों को बचा के ले जाएगा ना, ट्रेल ब्लेजर हमारा डायनन को. Convince the demigod or take the core flame. वही तो उसका काम है. It doesn't matter what you और do. हमारा फुरीना गंशिन में रेस्ट कर रहा है अभी, इसलिए एचएसआर में आया हूँ. We still haven't figured out how you and Don Hung got inside this world. So influencing protocol is currently our best way to stop Lygus, or to call for more reinforcements into this fight. Once you've got law in your hands, we'll discuss our next steps. Make sure the core flame doesn't fall in enemy hands. Herta, the firewall's interference. अच्छा ये वाला जो भी करंटली क्विज चल रहा है, ये तो बस दो जो कैरेक्टर्स उसका पास्ट मतलब जो लाइफ है वो बता रहा है ना. हाँ अच्छा हाँ वो तो किसी आइस से ब्रेक होकर बॉर्न हुई ना, तो ही तेरा मार्च 7 एंड वो दोनों बॉर्न हुए थे, बट मार्च 7 किसी कर तरीके से हो गया और उसके मेमोरी में रह गया. Mr. Don Hung did not enter the new world with you at the end of the last cycle. No, the flow of time inside and outside Amphorius is not identical. 1,000 years in this world may only be a fleeting second outside of it. Conclusion. तुमको जल्दी लेना पड़ेगा नहीं तो फिर. हाँ. Miss March's situation is rather complicated. हाँ. Madam Herta and I can detect her signal but cannot ascertain her location. अच्छा एक चीज तो अभी लाइक मार्च 7 अभी तेरा सितंबर 11 बनने वाला है, ऑब्वियसली बस सितंबर 11 बोलता हूँ, ठीक है. एवरनाइट बनने वाली है तो वो कभी मतलब वापस नहीं आने वाली ना, मतलब वो परमानेंटली सो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टोरी. वैसे कैरेक्टर वाइज तो रहेगा.
देखो बिकॉज देख इवन ना तो जो नया कैरेक्टर है वो अच्छे पर मार्स इवन का बात ही अलग है वो क्यूट है यार बहुत ज्यादा Don't worry about her. She's absolutely chock full of mysteries. Even if Amphorius explodes, she'll probably हाँ तो इवन ने तो खुद कहा था स्टोरी के एंड में कि भाई तुम मेरे को क्यों बोल रहे हो कि भाई मार्स 7 के बॉडी से निकलूं मैं ही मार्स 7 हूँ बस वो मेरा अच्छा रूप देखा था अब तुम मेरा असली रूप देखने वाले हो हाँ वही 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 हाँ वो उसको कहा पता ट्रेलब्लेजर को पता ट्रेलब्लेजर दोनों को पता नहीं ना हाँ वो दोनों ने लाया था ना हाँ यार तो भाई फिर तो मजा आने वाला फर्स्ट डे को निकाल रहा हूँ मैं भाई फर्स्ट डे को गारंटेड Your capacities. भाई लाइट कोड के साथ Powers of निकाल रहा हूँ भाई Trailblazers can create miracles and will certainly क्या लगता है be able लाइट to कोड snuff out निकलेगा the भाई flames of evil. पता चला लाइट कोड में हारेगा बेंचो I'm not going to give any motivational speeches. I just hope you bring good news. No, not little. Those two geniuses certainly have memorable personalities. वो हाय जैसा मैं तो सारा क्विस्ट अभी स्किप कर Feels सकते हैं weird. सब स्कोप में ऑप्शन This आने all वाला है feels 3.6 really से familiar. मैं Some of 5 this आईडी बना रहा conversation हूँ feels like it's 5 about आईडी में things I खेलूंगा once मस्त knew, but then forgot. 5 आईडी में हर एक कैरेक्टर अरे 10 बना दूंगा वहां Maybe की it's आग because of सबको एक Mem? दे दूंगा मजा करो After all, Mem's a memo sprite born out of your thoughts, friend. भाई Maybe our अपने memories जिससे somehow got tangled up यार together. स्किप बटन मारता रहा और क्या एक दिन के अंदर तो Never पता mind. चला एक दिन Let's के focus अंदर on something अकाउंट more बनाया एक important दिन with के अंदर what पहुंच little गया time we तेरा have. Just treat me as an ordinary girl with secrets, okay? जानना है इससे फायदा क्या होगा जिसको जिसको तेरा फेवरेट कैरेक्टर चाहिए तो उसे अकाउंट में पुल कर सकता है And the Chrysos heir who... So, we've at least got a solid direction, right? Can you give me a little bit of time before we go? I want to pack some stuff. There's so much more I need to take care of in this form. हाँ I'm जग still और क्या getting used to it. सब में स्किप बटन आ रहा है वर्ल्ड क्विज कंपेनिंग क्विज सब में एवरी सिंगल में जस्ट लाइक विदरिंग ऑयल जैसा This probably no longer exists in the हाँ outside 3.6 बता और 2 दिन बाद ही रुक जाओ 1 मिनट में बाथरूम होकर आया 1 मिनट तो ऊपर क्यों घूम गया साला देख भाई ईशान 3 HSR पास स्पॉन्सर कर दे भाई रुक जाओ ये किधर ये पजल यो भाई क्या खा लिया तूने ऐसा अबे बड़ा खा लिया हाँ देख भाई मेरे को
Yo, expand lover bro, what's up? Welcome to stream. Should I head to the attic to wait for Cyrene? वो कल रात को बकचोदी पेल रहा था। भाई मैं इतना आलसी हूँ कि मैंने ये चेस्ट नहीं लिया साला। अबे सीरियसली लेट्स गो। मेरे में इधर देख 82 पोल्स है। अब 83 हो गया। मतलब तेरा 90 पुल लेके जा रहा हूँ मैं भाई। 90 पुल तो ऑलमोस्ट। This village is where Finan's life started. After 30 million cycles. And he said I will take over the responsibilities of world bearing. But what does that mean? Becoming the new Catholic? मेरा गेंशिन में 52 पोल्स हैं। New path. Destiny must have brought me here. There's nothing to fear. I'm destined to play them. अच्छा मेरे को जानना है जो सायरन ये बड़ी कैसे हो I गई? finished packing. Chip marketing I के अंदर। decided to just bring these few things in the end. See? There's अब the उतना journal, बड़ा कैसे हो the गया बे? coffin, and the ceremonial blade of the priests of time. Holding it calms me down for some 6.9 में reason. बड़ी सा न्यूवेलर का रीजन The लिख scent आया of the है। black आ tide बे is भाई now छोड़ो। calm. Finan must still be fighting them in some way. This will be Amphorius's final flame chase journey. But it won't be the end of us. It'll be the beginning. Friend, are you ready to become a hero? Just treat me like any other friend you have. We share a common goal, and we may also share a common future. A future that has never emerged in any other cycles before. If you still can't get used to it, just call me Mem like you did before. Are you worried that the burden is too heavy for you? Don't worry. You've seen how every person regarded as a hero in Amphorius was nothing more than a flawed human, but those aren't coincidences. A person's personality is their Why don't we take everyone with us? In other words, maybe you can tell me those stories as we travel. That way they can become our shared memories too. Let's trailblaze onward like before and create a future that's worth being remembered. तू बता हांजो रॉबिन कब आ रही है? अबे यार रॉबिन का लाइट कौन चाहिए मेरे को? और उसके युवान। You should indeed treasure the view before you. तू अपना गला सही कर ले, तेरी गला की अम्मा भाई हो चुकी है। Time left to enjoy such. My apologies for disturbing your moment of repose. To fully express my apologies, please grace my abode with your presence, so I may demonstrate the full scope of my hospitality. तेरे को पता है? What is this place? ओए ईशान, तेरे को पता है अगर तुम मेरे को 361 का एक ले लो तो मेरा अभी ये निकाल सकता हूँ, बट हांजो नहीं दे रहा। Farewell then. May we all shall bid farewell
फायरफ्लाई का स्किन 1200 के ऊपर जेनेसिस पड़ा है बस और समथिंग 600 चाहिए After I कैरेक्टर cross है this मेरे river, पास it will be a tragedy for mankind. But साले if I थो do not cross, then it will be the end of me. Outlier. Executing command. Record. स्कूल ड्रेस वाला अरे ये वो स्पिन क्यों हो रहा Did है that मतलब startle you? वो ग्लिच इफेक्ट है HSR का ये स्टोरी है ना स्टोरी चल रहा है This is the intersection between Amphorius. What you see is the true form of the eternal land. Full And the fair, 12 boss. demigods after they've shed their disguise. Doesn't it look अरे चाहिए ना marvelous? फायरफ्लाई का Amphorius is like a microcosm of the cosmos. People love to portray the romance of the starry skies. but अरे their 361 में tales 600 मिल रहा है ना often बिकॉज़ पर डबल टॉप होगा ना different इसीलिए and far more. The moment ancient anticathedrals अंधेरे रूम में sketched हो तो और अभी geometric अंधी shapes हो on जाती sandy तो beach ब्राइटनेस कम and करिए recorded the first numerals and symbols on parchment, the universe turned into a silent equation. Erudition. It was once the mother tongue of the Hanzo, creator, the pen तू मेरे of को divinity, तू मेरे को हंद and तू the मेरे को first 4 यूरो दे दे miracle verse ever written by 4 यूरो भेज दे बस will. नहीं तू 4 नहीं तू मेरे को 3 यूरो दे हो जाएगा पढ़ाई करता है Seems like you are not in the mood for an idle chat. That is fine. I simply wish for you to understand that I have no intention of being your enemy. I have devoted myself over the long ये years लाएगा इसमें to बड़ा भलवा nurturing लगता the scepter's extrapolations, hoping that the Prima Mobile would bud from within it. And now, my goal is almost complete. Nikos 496 had exceeded the intelligence singularity through his rage, and though he still retains his obsessive defiance and managed to suppress the black tide of this cycle, it's a matter how. Iron Tomb will be completed. That will not be affected by my plans. Your resistance Hanzo-chan. the schemes of the two Hanzo. geniuses. It is an तू बस मेरे को 4 यूरो दे दे 4 नहीं तो 3 दे 3 में भी काम हो जाए in Nurse's calculations. In other words, ब्रो भी लाइक 3 यूरो भेजने के लिए मेरे को 10 यूरो चाहिए हो willing to stop interfering and let the final Aeronova carry out its natural course. मैं ये तेरा वो ऑरेंज क्रिस्टल्स है ये डबल टॉप अप में ना तो जो वो सेकंड वाला ऑप्शन है ना जिसपे 300 मिलते हैं ना वो उस पे मेरे को मिल जाएगा एक टॉप अप 300 वो वाला ले लूंगा मैं You've आ जाएगा मेरा always had a choice. You can either accept यार my 3-4 यूरो का जा रहा है अगर सही बताओ तो अगर वेबसाइट के यूरो के हिसाब से बोलूं consequences तो of defying it. स्क्रीन देखा इंट्रो कैसा है कौन सा स्क्रीन आधा तो थोड़ा 4 यूरो जा रहा है 4.43 यूरो हाँ स्क्रीन दिखा कैसा दिख रहा है खास तेरा पेपाल एक्टिव है जाता तेरा स्क्रीनशॉट ही नहीं चल रहा They've always been the product of the experiment. So, naturally, they will perish when the experiment ends. That outcome was predetermined long ago, so I will not embellish Stream such failed, a Kazuko. regrettable conclusion. तेरा स्क्रीनशॉट नहीं चल रहा Ah, yes, the real identity. हाँ
ठीक है. You are rest assured, but you need to learn how to use it in the right way. That vital knowledge is that piece is- also my bargaining chip in this and I happen to be तेरे पास one कार्ड of नहीं रहता ना? तेरे पास कार्ड नहीं रहता ना? someone who wanders the stars, someone who seeks answers. तेरा स्क्रीनशॉट नहीं चल रहा चौपा रख इंग्लिश में बोलूं क्या मैं तेरे को? Your screenshot is not working. Chopper. This matter is of grave importance, so please do not make your decision lightly. After all, the choice before you bears a 1 in 3 chance of elevating you to an unparalleled existence. I now see the full scope of the You may now continue your travel. लाइगास फाइट होगा तेरे साथ 3.6 में. The Exolith is as negotiations have broken down. There's no more need for us to remain in the audience's seat. अब आया है. Let's return to the कौन सा feature intro था दिखा? called Amphorius, where you will meet me once again. Of course, Yeah, this boy. meeting was not without merit. Your presence has inscribed. As for its purpose, 33,550,33 100 years ago, the flames इतना of war cycles चल रहा consumed है. Akama. The Akama. Outland forces broke through the dawn. Golden blood flowed with greed, and enemies descended with Kefali. Its generals had vanished, and the बहुत मस्त elders स्टोरी लिखा है इन prostrated on लोगों the ने. ground. मजा आ गया. Until the heaven and earth cracked open. Not the gods answering the people's prayer. Dawn Cloud spires fell in the sulfur rains, and the Legion's commander stood atop the broken वो idols 3.6 and के roared. बाद मतलब परसों के बाद तो अगर आएगा तो सारे पुश करने स्किप बटन आ जाएगा तो तू आराम से नया अकाउंट बना के प्रोग्राम कर सकता है. rebels have twisted a Chrysos heir she stood. Their golden नहीं नहीं blood फर्स्ट फेस में आ welched the जाएगा crown मतलब परसों ही आ burned जाएगा bright, तेरे स्किप बटन. outshining the fires consuming. My blood flows in you. Drive the enemy from Kefali's dawn. The first to dance was the people, full of wrath, surged with her, forming a colossal wave, and the enemy hordes drained मैं of खुद एक बार life, स्पीड रन करके देखूंगा vanished अगर into जितना टाइम nothing. लगा उस सब तो. Onward to Marmorial Palace. We are the rising tide! History remembers this as the first siege of Akama. It is said that Akama. after the flames died, people found identical inscriptions in every place in the city that had been scorched. It was the name borne by Akama's first and final sovereign. Friend, are you listening? Friend? Friend? Honestly, you were the one who insisted on reviewing history, yet here you are, dozing off? Wake up! Otherwise, I'll have to... Wake up! Otherwise, I'll have to... Awake at last? I guess I won't have to use my wake-up magic on you then. Fine, as you say. We've arrived. A familiar place. The Temple of the Three Fates. If everything went according to plan, it should be shortly after Talantin's fall, and also the end of the first... Indeed. It'll be tricky, so let's pick up our pace. To Akama first. Tyrant! You and your... Hold your tongue! Conspiring with Kremnos and... There are multiple voices, and things seem tense. Let's not get caught up in any trouble.
Why don't we find a place to hide and observe from the shadows? लेट्स गो। सबसे पहला वाला कंप्लीट हो गया। देख रहे हो कितने पुल्स मिल रहा है भाई। भाई देख रहा है कैस्टरिस का अलग ही ऑरा है भाई कैस्टरिस का। Bro, that's why she is too much cute. नहीं मस्त लगती है and she is pretty obviously. अगे बोलता है उन्या। तो वही करता रहा है। Wait, isn't that... ये क्या है उन्या वाला गप दे दो ड्रैगन को। Golden-blooded defilers, perverting the stars beyond the sky? Gods who created the Titans? What kind of nonsense? Look at this book and see what your atrocious acts have done. What? Did he just mention the stars beyond the sky? But how is that possible? You impudent! क्या हो गया सीधू का? Ducks for Goris. We're here to welcome the deliverer from beyond the sky. Stand down. Heretic! No one but the great Talantan can deliver this इसका world तो from एडिट देख के तो misery. मुद्दे देगा भाई। I ask you, if the old laws were so perfect, why did they crumble beneath my feet? You... ना मोड ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ बात हो ही रही है। ए मेरी पूरी ना HSR की हट पूरी ना इन मल्टीवर्स नहीं मतलब वो मतलब पूरी ना तो भाई बहुत छोटी है वो उससे भी छोटी है। What gives you the right to judge a priest of law? इसका थोड़ा है उसका तो है ही। That's because औरा फाड़ मार। I came, I saw, रोशी औरा फाड़ मार। I conquered. आय मैं चिल्ला क्यों रहा हूँ? Ducks for Goris, take the ashes of this man and scatter them in the temple among the crowds. साला हांजो ने मना किया इसको नहीं तो साला पहले इसको बार बार लाई चली जा रही है सीन तो कनेक्ट नहीं हो रहा। बारिश हो रहा है क्या उधर? ना ऐसे ही मतलब बार बार पावर सप्लाई का ही हो रहा है बार बार मतलब बिजली जा रहा है। These two accidental guests, Dux Gladiorum, if you please. As you command. Before their deaths. अलग की तो मेरे को होना चाहिए तो बार बार मेरे भी जाता है। बारिश हो हाँ तो बारिश होगा तो बजाएगा ना यार। Correct, but not the kindness you know. पर मेरा अलग ही फंडा है मैं नॉर्मली जाता है 5K में पीसी भी करता है करते हैं चलो तो खान वाला भी लाइक 5K के अंदर पावर सप्लाई का पंखे का भी वो नहीं आएगा भाई ब्रो को चाहिए 5090 बचे थे 10 रुपए। अरे यार 10 रुपए में पीसी बना सकते हैं। The enemy of my enemy is my friend. So, out of courtesy, I present to you this corpse as a gift. Careful. Let's wait and see what happens. She's probably trying to scare us.
For the sake of order, I am known by many titles. Flamebearer who ends wars, Tyrant of Dawn Cloud, Empress of the Holy City, and Imperator of the Flame Chase. The But in Flame light Chase of Journey. your unique वो ठीक identities, ना हो गया Spotify में I'll गाना allow you सुन to लो address me by my या तो real YouTube में name. सुन लो या तो हमेशा Sumitra. गाना सुन के On behalf of my people and this साइद्रा land, greetings, deliverer. If I may. हे शेख और में फाइनल पुल करेंगे साइद्रा को चलाएंगे As the और little क्या hostage prophesized, the deliverer हरिचान shall क्या come बोलती from the पब्लिक future beyond the sky. तो सबसे पहले मेरे को कैस्टरिस्टान का वो निकालना है लाइट कोन अपने Golden एशिया में eyes, skilled in wielding a mace. वो छू They would arrive in Yanisopolis on this day. There's no mistake. मेरे को कैस्टरिस पुल करना है चुपचाप सोना याद है Your orders, Emperor. नहीं I'm thinking about Triumphant. ये हाई Send सेलिंग an एक urgent आइटम का message to हाई all सेल delegates. इसमें The meeting लाइक of the Flame चार्ज Chase एक Alliance घंटे में will भी नहीं convene दिखता early. हाँ अगर तुम्हारा फोन पुराना हो गया होगा तो फिर बैटरी का भी तो एक हेल्थ होता है ना कि कुछ ज्यादा यार तक नहीं चलता ना Knows what you see. बिकॉज बनाया ही ऐसे जाता है कि तुम उसको 3-4 साल के बाद तुम छोड़ना ही होगा मोबाइल को तो कंपनी का लॉस होगा ना Doubtless you have तुम many मोबाइल नहीं खरीदोगे questions, but save them for वही बात है। later. Please follow us. क्या बता हारी चारी इसी बात पे तो अपना This जीपीयू is मेरे को दे दे Not what मैं I तेरा जीपीयू को expected खा at all. जाऊंगा The demigod we needed to find was वो just भी लाइक पूरा waiting लेफ्ट for में ले us. जा And जरूरत she नहीं knows of ठीक है things beyond the sky, even eons. How could this be so different from the previous 30 million Amphorius cycles? Who altered history? कोई ना आएगा आएगा हौसला रखो आएगा Unpleasant thought, but plausible. बस थोड़ा सा Currents of time have become वेट करो twisted. Regardless of who caused this, 4 रुपए में that जीपीयू Imperator came सीपीयू prepared. आ जाएगा We're 1 the रुपए ones में at a पावर disadvantage सप्लाई एंड now. कैबिनेट एंड मॉनिटर एंड की माउस We might as हाँ well मैं dance बना their कर दे dance. सकता हूँ आराम Let's से go बन with them to the जाएगा holy city. बोल भाई We've received the Imperator's favor because of your unique background. Yes. As a result, the people of Akama will certainly respect you more. Just put that to good use and add a bit of your experience and charm. Should be easier than last time, right? If we figure out what happened in this cycle, we'll be able to turn things back in our favor. अरे यार कल का वन पीस का एपिसोड देखा क्यों नहीं देखा भाई वन पीस देख भाई जाके भाई एक बार देख जस्ट एक बार मैन चोद कल ही तो देखा मैं स्क्रीन शेयर कर बता देता हूँ Exactly. Treeby, Aglaya, maybe even little Cypher. Guests, please. The journey to save the world starts Ah. with a single step. हाँ यूरोप वाला हाँ वो देख पाया What's सेकंड that, वाला my friend? 300 ये वाला कर ये इतना अरे पेपाल होगा तो महंगा हो जाएगा पेपाल से करेगा ना हाँ हाँ रुक जा आईडी बोल रहा हूँ 701 यूरोप Told यूरोप you, यूरोप you're the headline act. 70 Oh, this 701 spectacle is for you. 963 Your service to the holy city is appreciated. How have things 902 963 Castrum Kremlis once again struck the 902 border. Dux Brumalis led her troops to repel the enemy. Mr. The Silver agitators the against Luffy the Flame Chase are still active in the city. They smashed the आ shops गया in the हाँ Imperial हाँ आ Market, गया but the garrison already arrested the add culprits. to cart कर add to Now cart they await interrogation. They are
merely a disorderly mob. हाँ एक बार लॉगिन कर ले अपना लॉगिन कर ले Even though Terravox personally mended the fractured हाँ लॉगिन कर glass ले that stood वो inside सही these होता है ना fools. देख अगर तेरा है ऑलरेडी तो कर लो वहाँ यूट्यूब में आज मोबाइल के वीडियो आ रही है बिकॉज तुमने कल सर्च किया था ना इसीलिए आ रहा है Trivial matters. Dux Gladiorum will take you somewhere to settle down for now. और ना जिससे में लॉगिन नहीं तो नहीं है तो फिर न्यू बना ले देखो शिजुका तुम्हारा डाटा डाटा नहीं होता वो हर जगह घूमता तुम बस अगर तुमने मोबाइल लेके सर्च किया अगर तुमने एक बार भी पीसी लेके सर्च किया तुमको इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक तुम जो भी यूज करो आएगा ही आएगा ऐड आता ही है तुम्हारा डाटा क्या अम्मा भाई ने होता है वो हर किसी का है स्पेशली इंस्टाग्राम के अंदर Amphorius shall break its chains and reach the world beyond the sky. पावर पासवर्ड कर दे अगर पता नहीं है What तो exactly do you know about us and what's beyond the sky? लॉगिन कर As a लॉगिन कर humble subject, I cannot freely express my own views to you. हाँ Please कर ले forgive me. पासवर्ड याद रखना I knew it wouldn't be that easy. Time waits for no one. पासवर्ड Please come with me and Choose rest your now own. before the meeting later. Akama, under the Imperator's rule, is no longer in the shadow. Indeed, Dawncloud stands as the hero's residence. The Imperator Data- could much data तो thought भाई please अम्मा experience भाई its ने हो जाता। marvels first-hand, heroes. हाँ हो गया अब लॉगिन कर एक बार दिस see अकाउंट ऑलरेडी it. रजिस्टर्ड विद No गोस्ट wonder प्लीज she's the Knight's तेरा ऑलरेडी commander. है हाँ अरे तारे तू एक काम कर ना लॉस्ट योर पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर उधर नीचे 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 लॉस्ट योर पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर All right. We finally have some freedom to ourselves. Since there's still some time before the Alliance meeting, let's explore a bit. अगलिया आ गया तेरा हाँ हाँ अब जा उसमें अब वो कार्ट में जा जहाँ पर यूरो लिखा है जा प्रोसेट चेकआउट में जा चेकआउट हाँ ठीक है ना उधर से भी जा सकता है प्रोसेट टू चेकआउट Not the ones you're अब familiar इधर with, देख जो but the hearts of heroes stay the same in every cycle, never changing. मैं पेपाल कर क्लिक अगर तो पेपाल से करेगा और कहाँ से करेगा इसी जगह तुमको नहीं लगता ये कैरेक्टर बहुत पीटी है ये मेरी फेवरेट है सबसे ज्यादा आनी है रॉबिन हाँ क्या हाँ प्लेस ऑर्डर कर ये दोनों मेरा सबसे फेवरेट ये मेरा ये मस्त लगता इसका ड्रैगन बड़ा मस्त लगता कहाँ गया इसका ड्रैगन वेयर आर यू To complete your payment, contact us in live chat, WhatsApp, Telegram. हाँ वो बंदा आएगा चेक करने के लिए और नवा धमकी होती जो फ्लेमिंगो Dux Brumalis. So the great Imperator isn't afraid of getting her hands dirty? What a तेरा व्हाट्सएप में भी जा सकता है तेरे को जाना है तो तेरा व्हाट्सएप चेक कर दे वो What do you बंदे लोग know? आएंगे इसको मैसेज No किया matter what होगा sins the people commit, they are still the Imperator's people, and it's only right that they नहीं be तो judged by एक the काम करो देख Emperor's ऊपर own ऑर्डर hand. आईडी है ना उसका पेवर पेमेंट करना है उनको Ah, Seneca, the Dux Brumalis. हाँ वो आते हैं थोड़ी देर में आ जाएंगे अभी आवा है ना This Dux Brumalis doesn't seem to like the Imperator very much, but she holds a high rank. And Dux Vergoris' speech seems self-contradictory. Let me see what I can get out of that. I'm Cyrene of Ida Cilicii. This is the Deliverer Beyond the Sky. Does this city host any... Drop the charade. But yes,
There is someone in Maskar this wala, city hello, who is sir. all too familiar with the world beyond the sky. Silence! और दो The तीन बार. Imperator ordered us to keep that lord's whereabouts a secret. Enough, you pathetic lapdog. Do you need to beg for permission? Someone who is all too familiar with the world beyond the sky and is referred to as that lord. Looks like things are getting heated. Let's get out of here. How are we supposed? Virginia, don't be so nervous. Once they hear your poetry... Greetings. I am Apollonius, the Dux Helcolithus, one of the 5 sages of the Grove of Epiphany, advisor to the Flame Chase army. This is Virginia of Castrum Kremnos, the Dux Carminum and imperial scribe of the great Imperator. Hello. I'm Virginia. I compose poetry. I'm Serene from ID Silicii. This is the Deliverer. प्री इंस्टॉलेशन कितना जीबी का है? अरे मादर चोद 29 जीबी का क्या है? क्या ये नया आइडिया आ रहा है क्या हंजो? नया आइडिया आएगा क्या एचएसआर में? अरे एचएसआर में इतना कंटेंट भर भर के देता है, गेंशिन में क्यों नहीं देता? क्या दिक्कत है यार? वो लोग खिला के सो गए. अब सही वाला क्या पिंग है? क्या रे यूरोप पे 100-200 बार ये How are we supposed? Virginia, don't be so nervous. Once they hear your poetry... heroes, you're already here. Greetings. I am Apollonius, the Dux Helcolithus, one of the 5 sages of the Grove of Epiphany, advisor to the Flame Chase army. This is Virginia of Castrum Kremnos, the Dux Carminum and imperial scribe of the great Imperator. Hello. I'm Virginia. I compose poetry. I'm Serene from ID Silicii. This is the Deliverer. Nice to meet you both. They're not as frightening as the rumors claimed. This is our first time in the Imperator's realm. Akuma is even more magnificent than we imagined. If you all weren't here to look after us, we'd be completely lost and confused. The Akuma you imagined is long gone. Under the Imperator, this city has been reborn as the capital of the world. Bask in her free-spirited winds. For anyone who fulfills their duties to the Imperator, these winds shall forever remain at their service. Hello, got it going. Hello. But what if... Hanzo ko bola.
Those who are loyal do not need to consider the consequences of ये betrayal. Those payment किया elders who इसका The हुआ है elders of result this से बोलेगा cycle were all... Looks like that priest who was sent... Aggie, you're still so listless today. Did you have trouble sleeping again? Yes. We know. The Titan, no matter what, will... I know. I also understand. I spent all last night weaving clothes and linen for the refugees. The Chrysos War is born of injustice and has shattered their dignity. They deserve at least some basic decency. If Emporius one day abandons this, then all of us, commoners, तो भैया Chrysos इनके ये heirs, नशे करती है क्या Titans, become no better than beasts. Oh, we have guests. एक बजे ना पाँच अभी तक इन्हें 5 बज रहे I हैं am लोग a बैठेंगे These... What is the matter? Does your Greetings, deliverer from beyond the sky. We are Trebi of Yanisopolis. It's very nice to meet you. Although, introductions are probably unnecessary. We know... Witness the future of the flame. Indeed. Orynyx, so please, don't worry. Feel free to... It was Orynyx who told... More crucially, though we still must challenge the gods, in the Time Titan's prophecy, this path leads not to a new world, but to the true starry skies. This is also what the Great Imperator has been striving for all her life. Your arrival further confirms everything. This can't be real. Even you find this surprising? Fate really is unpredictable. Perhaps the upcoming meeting will hold even more surprises. The elders of this cycle were all... Looks like that priest who was sentenced to death wasn't an isolated case. Little fish from beyond the sky. Did भाई you ये rest कैसा well? कैरेक्टर है हाय सेलेनी The इसके बॉडी Imperator में and the ये delegates are about to arrive. If you are ready, please follow me to the meeting. I'm the Knight Commander of Akama, but beneath these shiny scales and as you've witnessed, she is the Empress of Akama, the one who ended the Chrysos War. The Chrysos heirs here. Dux Halkalithist, Dux Frigoris, Dux Fatorum, Dux Goldweaver. Then come. I'm starting to feel a bit... Since Saridra is presiding over the meeting, it'll be a good opportunity to learn about the law's inclinations in the current era. Let's keep our ears open, okay? रिलैक्स हो गया रे कहाँ है Good sir from Paphos, what do you think the Imperator is क्या है planning ये calling माइक this वाला meeting so early? My homeland can't endure anymore. Who knows? First, she wants to hunt Titans. Now she says there are even greater calamities. Her madness is the greatest calamity. Purilo sir, अरे जाए जा life. Exactly. Chrysos heirs. Things feel pretty... The history books said that the Imperator aimed 3 cannons at Dawncloud to make all the delegates obey her. Will history repeat itself in this cycle? Yes. Similar acts have occurred, and not just once. However, whether history will repeat itself, we'll soon see. Those are the 2 spots reserved for you. Please take your seats. अरे नहीं लेते इतना टाइम Ladies and gentlemen, silence please. The Imperator has arrived before her faithful council, and the Alliance meeting is about to begin. All right. In the names of Talantin and Kefali, the Akama Alliance swears upon the gods. Cease the pageantry. I pray not to the vanquished. What?
Kefali, of course, needs no further explanation. अच्छा As for M4 the 3.6 law, और at the 3.7 entry वाला जो hour twist 2 होगा days last होगा ना past, M4 a scout should have brought news of the conquest to all of you. Unfortunately, guards found his corpse among the rocks not far from the city. Moreover, the poor soul was buried with a Paphos curved blade. It pains me to imagine what agonies this loyal warrior endured before his death. Delegate from Paphos, do you have any insights? I know nothing of this. The evidence is irrefutable, so there is no need to waste your breath. However, let us set this trial aside for the time being. Witness, even within the most sacred and dignified council, there were those among us who wished to draw their blades, brazenly challenging the Alliance, seeking to shatter our hard-earned peace, and fortunately, they will escort each of you to the Temple of the Three Fates, where you will receive the highest level of protection the Alliance can offer. Then, the Legion's warriors will join me in embarking on the campaign against Fagusa. This is clearly a trap! Imperator, did you summon us here just to trample on the dignity of your allies? Enough! Just calm down. Things are starting to get Who has it pretty in? intense. Comrades, you've all seen her true face now. According to the ancient laws of Akuma, only with the consent of 2/3 of the elders can the legions carry out the commander's orders. The ancient laws. Didn't you destroy them long ago? You defected during the first siege of Akuma, voted unanimously in favor of the Council of Elders restructuring, and just yesterday, you desecrated them with a blood-stained blade. The decaying old laws fell with Talantan, and are no longer deserving of respect. But if you still insist on proclaiming yourselves defenders of the law, then be silent and offer up the highest respect to this core flame in my hand. That really is the core. Since there are no objections, then the original agenda of this meeting, the campaign against Fagusa, is hereby passed. The Flame Chase Army's hunt for the Ocean Titan begins today. In order to prepare for war, all allied city-states must surrender command of their militaries. At this moment, I would also like to introduce to everyone the newest honored guest to join our alliance. The Deliverer, revealed in the prophecy of time, has descended from beyond the sky. With her aid, we shall shatter the challenge and return Fagusa's core flame to the holy city! Absurd. Simply absurd. A deliverer from beyond the sky. This is just like that prophecy about slaying gods. It's a lie you've used to grow your power. Ladon has already sacrificed countless soldiers. And now you want me to send even more of my brothers and sisters to be used and discarded by a tyrant? Are there any other objections? Then I bid you all farewell. Meeting adjourned. Deliverer, please wait. I still have important matters to discuss with the two of you. ऐसा क्यों लग रहा है हाइड्रा के अंदर हाई सीलिंग काम कर रहा है? भाई उसको मैनेज कर भाई ब्रो कम ब्रो अदरवाइज पिक अप अगेन मैं बात लिख रहा ब्रो बोल किधर हो भाई हेलो हेलो सर
हो गया क्या ये? Why she is too much cute? I don't know. 80 फीट। अरे यार क्या लगता है निकलेगा मेरा? क्या है अच्छा मैंने देख देख सुन मैंने इस तेरे क्या बोलते हैं उसके लिए पूरा फार्म करके रेडी करके रखा हो बस आएगा मैंने इतना फ्लावर फार्म किया हो इतना फार्म हाँ बोल हाँ 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 I apologize for that farce of a meeting. It must be tiring dealing with so many people every day, Great Imperator. Tiring? You're mistaken. Moving chess pieces, placing पेजिंग wagers. हुआ तो आज तक क्या This विंडोज game का of दिक्कत है किस strategy चीज adds का a दिक्कत dash है of color to our heavy fates. अरे विंडोज Much दो like बार how चेंज कर rule and दिया conquest are always accompanied by sacrifice. Is the war with the Titans also part of that sacrifice? तो तब भी तो नहीं होगा भाई After I glimpse the secrets of this world, no, the secrets beyond the sky, the divine अरे हांजो का तो बकचोदी देगा हांजो को लगा तो नाइट्रो का क्लिक मेरे को लगा था फैक्ट्री मेरे को लगा था फोटो होगा बात मेरे को लगा था वो क्लिक करेगा भाई ये किसी को भेज दे ये किसी को भेज दे भाई आर्या का पास अकाउंट ही नहीं है The word fact has never been. Then, please tell me more. In the future you envision, where will our flame chase journey lead? तो मेरा चिपक के फिर बंद हो जाता है बंद हो जा मेरा मेरा क्रैश नहीं करेंगे मेरा बंद बंद हो जाता है नहीं मेरा बंद हो जाता है मतलब ऑटोमेटिकली वो विंडोज बंद कर देता है मेरा पीसी को फिर नॉर्मल हो जाता है intervene in Amphorius's laws, we may have a chance to alter this world's impending fate and reverse its destined end. वो मतलब क्रैश तो नहीं कहूंगा बस बंद हो जाता है बस ओबीएस पे लिखा आता है कि क्रैश हुआ है बट एचएसआर में बंद हो जाता है वो You have courage to say such presumptuous things, even knowing that the inheritor of the law stands before you. You mean? In the past, anyone who dared to covet the Imperator's divine authority would have met a gruesome end. आगे ए व्हाट्सएप में जा See beyond this. बोल कि भाई मेरा भाई मैंने वो स्क्रीनशॉट लेके बोल आपका ये बंदा रिप्लाई नहीं दे रहा Should no अरे longer be confined below ये this क्रोम में जाना stubborn ये बोले स्क्रीनशॉट ले पूरा पेज का स्क्रीनशॉट ले बोल आपका सर ये रिप्लाई नहीं दे रहा अरे स्क्रीनशॉट लेना हाँ अब उसको व्हाट्सएप में Ctrl+V दबा Ctrl+V दबा If the core flame of law cannot be returned, वो वाला your path to deliverance will never be realized. Now that things have come to this, अरे बहुत सारे के उसके बाद सिलेक्ट करके उसको ओपन कर and force the waves that block our way to recede. बोल आपका बंदा रिप्लाई नहीं दे रहा So, you agreed to cooperate with us? Cooperate? Forgive me, but I never cooperate with anyone. Though I will permit you to join me as subjects, and together we will forge the most perfect law. आपका बंदा नहीं आपका This is बंदा क्या बोल रहा the Flame Chase Medallion, a symbol of the Flame Chase Army. बोल रहा Every noble in Akuma carries one. This medallion represents the will उस of the दिन नहीं हुआ मैं herself, विंडोज में कुछ छेड़छाड़ and you नहीं may act करते को freely लगता within the होगा city with it. हाँ Before we embark on the crusade against the Ocean Titan, you should rest in Akuma for a time. अबे
तो वो कैसे होता है? मतलब क्या विंडोज 11 का ही प्रॉब्लम है ना? बहन जो वो चुई चुतिया है। Your advice is acknowledged. From this moment on, prove yourself through your actions. As long as no boundaries are crossed, I fully respect the choices of my subjects. लगता है मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा। May your journey reach that sky full of stars, great Imperator. Your attendant certainly knows how to curry favor. Go now. Take a bath first. स्टोरेज तो मैंने फ्री कर दिया, सब साटा में डाल दिया। एसएसडी तो अभी तेरा 260 जीबी फ्री है। हो जाए, मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, स्ट्रीम करने के बाद आ जाना रात को। रात को आना, रात को मैंने बैठ के कल ना सब गेम्स थे सबको साटा में डाल दिया। Theoros. Yes. Theoro. Great Imperator. Now, perhaps you're willing to hear my counsel. क्या वो लोग क्या कर रहे हैं क्या? Those two arrived just as Oronix described, and just as you said, they showed a thirst for law. Okay, लाइगस आया है अभी। At least this proves that my judgment was right. Sparing your life was the correct decision. You've once again confirmed that your wisdom is no empty boast. Now another choice lies before you. With whom shall you ally to tip the scales of law? Me or that deliverer? Remind me again, Antikytheron. I shall. You are entitled to know that the deliverer from beyond the sky is not a wholly wicked being, but from the very start, the road they have chosen will bury Amphorius' grand aspirations. अरे जरा मजदूरी करियो। On the path I have revealed, you will command the mighty beast known as कर रहा है ना उसका हुआ का। bringing waves of war and conquest. अरे कितने में वो कर रहा है ईशान? So, what's the price? 500 रुपए पर मंथ। मैं जानता है ऐसा है, एक बंदे से 1500 रुपए पर मंथ निकलता है, जानता कुछ नहीं। एक वैसा नहीं बस। हाँ दिल्ली से छोड़ देता। दिल्ली तो इवेंट 1500 रुपए पर मंथ। वो कुछ बोलता भी नहीं था। बोला अकाउंट जिंदा है ना बस। बिकॉज़ बंदा खुद वही ले। Off you go, Theoros. What? I have already made my decision. Once I ignite the core flame of law and burn away the old, outdated rules, साला पगॉड की वजह से आज मेरे Amphorius will embark on a journey across the stars. Across the stars. The Imperator, and she's साइन clearly साला अभी hiding. बच्ची है, फिर बहनचोद next। There are many uncertainties right now, but this पर is one of the few लड़का या blessings. लड़की है पहले डिसाइड कर ले तेरा Still. दोस्त। The atmosphere in Akama, it's so unfamiliar. And it's not just the Flame Chase Alliance talking about the world beyond the sky, but the whole city. We should also discuss our findings with our friends from beyond the sky. Then... then... we should go enjoy the renowned bathing culture of the holy city Hurry, and relax. give me your money. It's the thing I've been... Hurry, give me your just damn money. Work and rest are both important. You see, Yes. everyone agrees, right? So someone's watching. Why you Can't give let our me your guard down damn for a second.
Let's use taking a bath as an excuse to 500 find a रुपए quiet पर corner to महीना update Madame Herta and कमाता है Skrillum क्या on our करता है ये progress. 500 रुपए का तो मेरा We can 500 also में check तो out what's लिमिट में happening निकल in the जाता है city. Since the outcome of the meeting was just announced, people must be gossiping. लिमिट We can kill 3 birds with 1 stone. सब इस महीने का 500 नहीं दिया Oh, so many people! The holy city हैं is जो so रॉबिन का जो lively. उसके नीचे वाला ड्रेस भी है वो भी भैंस कलरिंग है साला काहे ड्रेस बनाया इन लोगों ने Did you hear? At the Alliance meeting, the delegate from Leyden stormed out in anger. As expected, the Imperator is always hiding things from everyone. When has it not caused a ruckus? Silence! That's treason! If it weren't for the great Imperator, you'd have sunk into the lake with those corrupt elders already. And you wouldn't even be alive to speak like this. That's super. Oh no, it's the Imperator's loyal dog. Let's go. We can't talk in front of this guy. How वन disappointing. पीस का न्यू एपिसोड का एनिमेशन देख भाई गफ फट जाएगी हाथ में आ जाएगा Oh, honored guests, we meet again. Looks like I'm not the only one who came to the baths to unwind after the meeting. For the upcoming campaign, please make sure to rest well. क्या बोल रहा है वो व्हाट्सएप में मेरा रिप्लाई नहीं दिया A trusted officer of the great Imperator, willing to fight alongside the Deliverer in the coming खाना खाने गया battles. है Another war? Ever since the Imperator took control of Akuma, we haven't had a day of peace. Idle chatter. The atmosphere is a bit What are you? tense, with rumors flying around the city. You must be troubled. My apologies. After every Alliance meeting, there are always some pests in the city who get restless. I prefer to ignore them. Pests on the ground don't affect the sky in the slightest. They अरे just जाकर तो complain 200 from का the ऐसे ले shadows भाई that the और sun's गोजो का light चौड़ा is too बनता है harsh. Besides, the Theoros has already promised the Imperator her fate. And these clowns will eventually realize their foolishness. May I ask, नारुतो से तो नारुतो का who is शिपोडन क्यों this है पॉपुलर Theoros? The Imperator has ordered us to keep his lordship's whereabouts a secret. Ah, so it's his lordship. मैं तेरे को Stop जूस तो trying to ऐसे get things out of me. Leave me alone. I didn't even need to try. Big and strong Dux Fragoros really can't hide anything. गाची गाता Theoros. What an ominous name. Bad news. He's been staring at us the whole time. Let's move to another place for now. फ्रेगमेंट और ब्लूम्स with We dignity don't know how much वाटर Saritra has magician से concealed भी from ऊपर us. In the worst case scenario, we may have to face more than one enemy. भाई बोल जानता है बोल भाई वो कोई यूज नहीं करता तो मैंने भी बंद कर दिया और वो प्रीमियम नहीं ले सकता बिकॉज क्या बोलते हैं फैमिली में ऐड नहीं हो रहा और कोई बंदा पैसा नहीं देता तो मैंने बंद कर दिया अब नहीं होता अब तेरे को स्टूडेंट आईडी से लेना होगा तो कॉलेज आईडी दे दे 69 से हो जाएगा लेट्स गो चल इसी बात में हिला ले और हमारा नियॉन की क्या कर रहा है मुझे मार के सो गया अच्छा अच्छा ये तो दुर्गा पूजा में कहाँ घूम रहा है
साला श्रीभूमि में बहन चोद भाई कल से भाई इतना भीड़ मैं भी ले करे भाई दुर्गा पूजा स्टार्ट भाई क्या भाई होने भी नहीं दिया चालू हो गया भाई। अरे अरे मम्मी को बोलो कि मम्मी देखो भाई आपने आपके जमाने में गाना सुना है हमारे जमाने में गाना सुनने के लिए स्पॉटिफाई चाह बोल और क्यों क्या हाँ क्या मतलब वाला लाइट आ नहीं रहे और ज्यादा मूड ऑफ रहे है गाना सुनो यार गाना ज्यादा अच्छा है सुन तुम्हारे क्या होगा ममता वाला Clearly, a tyrant who doesn't deserve such a title. You're absolutely right. While the Imperator's hounds are still hunting down others. What? Ew. I know. अरे छोड़ भाई बंगाल को पाकिस्तान बना रहा है I don't care what others say about the Imperator. And she certainly doesn't either. Oh? Children of the Prophecy. Such rare guests. Are you here to relax in the baths as well? The temperature is just right today, so be sure to enjoy it. You should. Minus RGB. चेक कर रहा हूँ मुझे क्रैश हो गया था कर रहा हूँ गेम ओपन हो रहा है उसको बोल 1 सेकंड रुको अभी क्रैश हो बात तो सही है वैसे उसके लिए भी तुमको नेट ही चाहिए होगा बिना नेट के दुनिया नहीं चलता 2025 में Alliance meet in You're absolutely Ew. I know you. Wait, but would the Imperator actually kill those who question? अभी तक तो हाँ आ गया लेट्स गो हाँ आ गया तो गाइस अभी हम लोग परचेस करने जा रहे हैं ये वाली स्किन वो लेकिन धोए ले रहा हूँ मैंने ये लिया नहीं हाय The world be हाय फायर का स्किल ले लिया ना on the sky? नहीं ये लगा अच्छा बहुत मस्त लगता है अरे ये रहा आके अकाउंट में देख लेना अब तो दे है तो ये देख फायर का स्किन ले ना सी है ना क्यूट तभी क्यूट ये प्रीटी दिखता है ये काफी क्यूट दिखता है इसका ड्रैगन तो अब बड़ा खतरनाक इसका ड्रैगन कितना ये इतनी क्यूट है बहनचोद इसका ड्रैगन देख कितना बड़ा है This is the complete opposite from what we know. मतलब हांजो अगर 5 यूरो जस्ट इमेजिन कितना हांजो भाई गरीब हो गया भाई हांजो और गरीब में मार ही नहीं सकता साला वो वाला एनिमेशन ही नहीं आया था Two distinguished guests of the prophecy. One a clever and adorable warrior, the other also quite heroic. हरिया जरा पैसे देना 10 रुपए
क्या मैं दुर्गा पूजा में घूमने जाऊंगा, हरियर से पैसे मांग के जाऊंगा। और हांजो, कभी लगता है इन फ्यूचर कोलकाता में दुर्गा पूजा का टाइम आएगा? Heroes, I didn't expect to meet you again so soon. How fortunate. Yeah. It's a pleasure to see you again, Dux Helcalithist and Dux Carminum. This... Oh, she wants to find someone to help with research for her new work. 12 एपिसोड का ही तो एनीमे है। तू भाई मैं चेंसमैन देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हें अगर टिकट का पैसा देगा बोल जाने का। हाँ तो 480 बाका चल 500 मतलब 600 रुपए देगा, बता हारी है। The holy city, and the Imperator unilaterally stripped away military power. The Alliance. I get the feeling. तू जाएगा क्या देखने? I swear on my stone maid, I would never do such a thing. भाई सपने में सपना देख, बट आप औकात के बाहर सपने देखते हो ना, वो बड़ी गलत बात। वाह 1000 भी मुश्किल है। Never mind. While the heroes, I can't comment. The Imperator's blade. I sense some There are eyes and ears everywhere. Is there any place where we can have some privacy? To understand the Imperator's secrets, we have to get past Miss High Sealands. बेकार बात हुआ है। मैं तो रॉबिन चान। This place. The smell is. Wait, don't go in yet. Oh, the little gray fry in pink. आराम से। Little. You barged into here without. Sorry, we didn't. It's no big deal. Forget it. All right. Please make yourselves comfortable and wait a moment. अरे जरा पैसे। Wash off the blood of the hunt and then. अरे जरा पैसे देना। The delegate from Ladon has been assassinated. Quick, someone come quick. The broken crab shell surfaces. I was worried it had been washed away by the current. I see. Why? Is it because the new era of right now the rebel forces on the frontier were rising, and Ladon has been thinking is a right given to citizens by the Imperator. I won't interfere with your thoughts. As long as you don't try to reverse the current of the times, you and I will both be free. But Miss High Sealands, I can't even hear the slightest hint of joy in your words. Because I've already tasted ultimate freedom. Long ago, I lived in the sea. Yes, in that lightless abyss, undo it. Far beyond civil. This is the tide that. Are you suggesting that ultimate freedom is in fact the cruelest fate for life? I only mean that if life wishes to preserve its dignity, it must first be bound by the law. There's no need for me to. Whether the Imperator's. आवाज नहीं आनी चाहिए तेरी. Let's pause this heart to heart.
Another fish has come, following the scent of blood. Being your subordinate. It's simply our duty to the... All ready to go in and... Yet you, a golden trout who's always busy all day, suddenly have the time to visit me? Do you think I wanted to come? I suggest you burn some more of the incense offered by our allies, lest my creations be tainted by the reek of fish. I'm only here on the Imperator's behalf to remind you to prepare for the banquet. Fine. But I must retort. What you call the reek of fish, to me, is the unique fragrance of the sea. Besides, if my fine clothes get stained, won't you just gift me new ones? I won't. By the way, you... Oh, right, you don't... For us warriors who... don't look so grim. I'm not as careful by the time the cool flame illuminates. Glaya's eyes. Curious about these eyes? People often compare them to jewels. But I've already made my decision to ask a romance for eyes that can see everything. I wonder what this world will look like when I take the divine authority. In the future, you will still be the finest weaver in the world. Is this also a prophecy from the Three Fates? It's even more accurate than a prophecy. After all, she has already witnessed it, right? Become a demigod and lose your humanity. That is the only reply I've received in the countless times I've sought wisdom from the prophecy. But destiny's fragments. ओए हरी 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 तेरे पास 139 रुपीस नहीं होगा ना? But thanks to you, she seems to be in much better spirits. अगर आज निकला तो साला पैसा ये दे ही नहीं रहे यार, छाड़ो लो, करूँगा नहीं, मैं मना कर दूँगा, आज चुदा नहीं करना है। एक तो अरे भाई मेरे को आज बिल पेमेंट करना है भाई, ये लोग भाई नहीं दे रहा। एक लड़की चल दे देगा, बट ये एक दो भाई है कि मैं नहीं करूँगा भाई, बाहर में जाओ तुम पैसा रखो मैं। Indeed, but so let's seize the opportunity. First, while that little empress with a candle stuck on her head didn't explicitly say it, she firmly rejected your request to take over the law. Fair enough. Second, Lygus is indeed in this timeline, but since he's somehow connected to that little empress, you have no way to find him. As expected. The road ahead will be long and difficult. It's all just a guess. What? Did I guess right? We've made some progress here too, but nothing to get too excited about. Our time is short, so let me summarize. Concerning the origin of that Intellitron, the firewall he created uses Katorzane algebraic expressions. But ever since Aiden invented the 9-worded formula, this kind of mathematical logic no longer exists in the cosmos. Lygus is definitely connected with Genius Society, so stay alert. Hola. We can first exclude Droidhead themselves. They specialize in minding their own business and wouldn't intervene personally. Currently, the most likely candidates are these few. PayPal was बहुत charge करता है. Oh, the 2 Ruperts are also possible, but it would be too boring if it were one of them.
तेरे पास कार्ड नहीं है, कार्ड में तो नहीं करता। We also have the same suspicions for now. But हाँ तेरे पास तू US डॉलर से पेमेंट कर सकता था तो हो जाता। That's all I have to say. Will depend on you to continue pushing things forward within this world. हाँ US का भी जो हाल हो रहा है And remember, don't let your guard down. Madame Herta is a real whirlwind. Well then, let's use the banquet Aglaya mentioned as our next starting point. Ceridra's trusted followers should all be present at that time. It'll be a good opportunity to get closer to them. मेरे पास कोई बंदा नहीं है भाई। It's settled then. It's been a long day. We should get some rest. Yes, let's. हांजो तेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है कि HSR वा गेंशिन का अकाउंट करवाएगा? Right ahead. And I can even hear singing. नहीं गेंशिन का भी। It feels so romantic. Honored guests. The Imperator's. I get that you don't want people to bring outside food into the banquet, but is it really necessary to confiscate the books and quill pens? Even a quill pen can become a deadly weapon in the right hands. I'm asking for all your Hydra belongings will remain safe. They will be looked after appropriately by dedicated staff. Looked after appropriately? Dedicated staff? Talk about a vague choice of words. Nice! You read my mind. Let's go with their plan and hand over the chronocognitive anchor to be looked after. After all, if the little Imperator is paying this much attention to you, but that's actually gonna be our guests. All right, we'll listen to you. Here you go. Also, please pass on a message to the Imperator from us. She can trust my friend, anywhere, anytime. Thank you for your cooperation. The Imperator has some urgent business she needs to attend to and will arrive shortly. Why don't you head in with the other guests first and enjoy the feast? Isn't Ceridra supposed to be the focus of the banquet? But she's not even here. Why is it so difficult to talk to her? Is there anything else we can help you with, dear guests? Or do you want me to recount the great Imperator's heroic deeds? Hey, Labinas. I managed to get some honey brew that the scholars hid in the cellar. Wanna try it? I'd never refuse to share a drink with Dux Brumalis. Don't worry, dear guests. The banquet security won't be compromised. This banquet has a never-ending flow. Thank you for the offer, but we're more interested in knowing when the Imperator will be back. The Imperator? Hey, I can't pretend I... Fine by me. Attendant, bring us 10 more jars of honey brew. I'm gonna make... You wish. Actually, there are so many people. We wouldn't be able to find the Imperator even if she... You two have been wandering around. No, we love it here. It's just... we're a little concerned, seeing how the Imperator still hasn't arrived. Don't worry.
I know what you've been waiting for. Bye. Come, sit with me for a while, will you? I'd like to share a personal secret with you. See here? This is Fagusa's dew of divine blood. On the night before such a historical event, I'd like to share this marvelous drink with the deliverer. Doesn't this count as bringing in outside food? I knew that security check was targeted at us. What's the matter, guests? Oh, we're simply overwhelmed by such an honor. Are you worried that I might have poisoned the dew? Well then, let me prove my innocence. See? It's completely safe. I feel like Miss Hysealins wants to talk to us about something. Why don't we go along with her for now? Worry not. Honeydew's not. On the contrary, it can make your mind even sharper. Please, have a taste. Would you like some too, little Sierra? I can drink it myself. How is it? Sweet enough? As long as you like it. Calm at times, tempestuous at others. That's the taste of the ocean. It'll do you good to understand Fagusa's fickleness before we set out to face their waves. Just like how you're about to understand the secrets within this dew. चलो देख भी लेते हैं. Now, please turn around. Very, very quietly. Don't make a single noise. सर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना. लेट हो जाता है ना इसीलिए जाना भी है दूसरा नाम हार्ड हो गया और एग्जाम खत्म नहीं हो रहा. The dew of other gods all intoxicate humans, but the god of banquets dew is an antidote that can awaken humans from a sea siren's enchanting song. Since the start of this banquet, all the guests have been under the spell of my song. None of them can see the Imperator and that Fioros. But you two, I wish for you to see the truth. Is this also what the Imperator wants? This is my personal request. I can't bring myself to trust that Fioros. The Flame Chase army changed after he descended with Orynyx's divination and brought the prophecy of the stars to Akama. His seductive whispers harbor something malicious within and will ensnare those of us blinded by ambition. You are the deliverers of the prophecy and know about him far more than I do. Perhaps only you can find traces of the truth from his actions and words. ही बोले भाई मेरा Spotify का प्रीमियम विंडो. But isn't this acting
Behind her back? Amphorius has become far too weak. Even heroic actions protecting her from harm must be conducted under the water's surface. I am the Imperator's blade, and I must clear the way for her while remaining concealed in the torrents. Then, ensure I'm pointing my sword towards the true enemy. Can you promise me something, Miss Hycelens? Ask away. My friend has in fact come here to stop that villain's evil scheme. Our goals are aligned. But as to the decision the Imperator must make, she has no wish to transgress her authority. We just want to tell her everything we know. I believe the Imperator will be able to tell right from wrong. I never doubted your loyalty. I'll pass your words, provided we can gain the advantage in this tug of war. Now, return to the feast. Bring this cup with you and keep your distance. Pretend you are still immersed in the sea siren's fantasia. And I'll control the moisture in the air. That way, you'll be able to listen to sounds from afar as if you were a whale of the depths and hear every word of their conversation. I wish you a victory in this first skirmish. It's the exciting and thrilling undercover part of the adventure. एक मिनट वेट करो, बात करूंगा। Ah, seriously? Let's mingle in the crowds here. Relax. Relax. Try to act natural. Where's the Imperator? Still not here. Family बंद हो गया. He's always acting so high and mighty towards everyone. Today, I will. Same. Whatever. Pour me another cup. Though she has succumbed to drunkenness, she still does not dare challenge your authority. A criticism of my height is a grave enough insult already. She should be dismembered. Do you often test the loyalty of your subjects like this? You jest. The Imperator does not need blind loyalty. As long as one can prove they have value, I am willing to be lenient towards them. Let's cut to the chase, Theoros. If I pass the trial and grasp this world's law in my hands, what will you do then? The answer is simple. I will connect Amphorius with the stars. Don't waste my time. Be precise. Allow me to adjust my statement. I will correct the regulations within the old law that sealed off Amphorius and merge the black tide with the torrents of Era Nova. Then we will be able to decimate the forces beyond the sky that are trying to annihilate Iron Tomb and sound the trumpet for the endless campaign you will then embark on.
But you previously said that Iron Tomb is unrivaled in power. Yo, Sanyo Kandere bro, what's up? Kaise? Welcome to stream. Who dare to annihilate it? There is a federation of warships named the Cienzo Alliance. Warlike and old-fashioned. A cult named the Genius Society. Loosely organized, but steeped in abject insanity. Oh, there's also the Astral Express. A group of lawless vagrants. That so-called Deliverer is part of that last group. Those we believe they can connect the stars to align. There are countless. The Achaemenid Alliance? If those civilizations are not as feeble as you describe, then they may still have some value in testing the... What if that's not something you or I should... How? He's looking this way. Quick, do something and pretend we can't see them. Slow down. Are you okay? What's the matter? My apologies. I was just checking whether everything was fine. And it seems like all is well. Let us continue our previous conversation. Regarding the soldier, are they aware of the price they must pay for the trial of law? If I recall. You dare mention my name alongside the word... Forgive my... Watch your words and act, even without the trial of law. If everything happens according to our agreement, how would you... Good question. Therefore... You plan to torture... calling it... The guest's patience is running thin. I will heed your advice. Leave for now, Theoros, and go back to Akama. You don't want... Indeed, it's a pity that Antikytherans are lightweights when it comes to drinking. As I expected. Thank you for your bravery, guests. It's time for me to dispel the Fantasia. This will be the Imperator's last public address before we head off. And therefore, likely, the final chance to change her mind. I will try to get you a chance to speak, and I'll also prepare for any contingencies. The rest is up to you. Okay. You should head back to your seats for now. This honey brew sure wears off fast. The Imperator! The Imperator has arrived! No need for formalities. I should be apologizing for my tardiness instead. The hour draws late, and I trust you have all had your fill of brews. Therefore, I will not observe the usual ceremonies. Any warrior who has fought by my side should have those speeches memorized by now. The Imperator's word is law. Are you out of your mind, Dux Frigoris? The Imperator hates flattery most of all. A joyous atmosphere is a better fit for showing me your resolve. I believe that you, my dukes, will do all you can to assist in the campaign against Fagusa, just as you always have. However, it's a pity that I have never tested your loyalty. What does she mean? The
purpose of tonight's banquet is not to raise our morale, but to establish which allies our alliance can actually trust. And sever the heads of the traitors as a toast to all before we march. Yes, some among us have discarded their vows in order to foment vile conspiracies. Now listen! These traitors are standing right here in broad daylight. Dux Gladiorum Hycelens. She used the Sea Siren song to immerse the crowds in an illusion and conceal her whereabouts. She then worked with those from beyond the sky to spy on confidential matters, hoping to rob the core flame by force and harm me, the Imperator. नया क्या है वो तो नॉर्मल हे लाल भाई एक इमोट भाई मेरा टैग भी नहीं गया एक सिंपल इमोजी दिया हो मैं तो कुछ बोला भी नहीं क्या बंदा भाई Imperator, I can explain. Silence! Do you remember who used to own this blade? She met you once, back at the Temple of the Three Fates. It was Kindness, the head of the cleaners. She was the first to draw a blade against the Imperator, and personally made herself an example for my enemies. Under the shade of the olive groves, the people of Akama said they would never bow to me. In the frozen, lethal fog, the people of Idonia said they would never bow to me. hentai style खेल रहे हो ना इसलिए क्या बोल Of the myriad paths, the people of Yanisopolis said they would never bow to me. But now, they all lie. Oh हाँ, by the way, आपके गेनशिट में स्किप बटन नहीं आया हेंटा स्टाइल के अंदर वर्ल्ड क्वेस्ट कैरेक्टर क्वेस्ट कंपेनियन क्वेस्ट सब क्वेस्ट के अंदर स्किप बटन ऐड हो रहा है 3.6 से इवन कट सीन भी स्किप हो सकता है इवन जो पुराने क्वेस्ट होंगे उसके कट सीन में तो रिप्ले भी कर सकता है इवन रिप्ले क्वेस्ट भी खेल सकता है After I cross this river, it will be a tragedy for mankind. But if I do, वो भी हेंटाई स्टार रेल के अंदर then it will be the end of me. If you are ready, then I'll follow you. गेनशिट और कुछ नहीं कर पाया बट हेंटाई ने कर दिया और क्या चाहिए हेंटाई स्टार रिले भाई इतना कुछ कर दिया जो आपको उसने भी नहीं कर पाया That's right, friend. Now, use your identity and add in a bit of experience and charm and testify to the Imperator as we promised. देख भाई अगर You think you can slay a king using your words instead of a sword?
I'll have बोलना होगा. it. Show me the weight of मैं- rhetoric from beyond the sky. Will it weigh heavier than 3 human lives? Let's try to watch our words carefully. Before I arrived in this world, the Chrysos heir of world-bearing was a young man with the pseudonym of Finan. He came from Ides Elysiae. In order to combat the lies of the Era Nova and deliver Amphorius from the ending of destruction, he lived through history 30 million times, hoping futilely to find a breakthrough. अबे And Cyrene, the young woman standing beside me, also carries an equally heavy destiny. Matashina no Soul Lygus Society. is not a guide at all. He doesn't care about Amphorius, and cares even less about your glory and campaign. The only thing he cares about is completing the Amphorian experiment, making sure Iron Tomb is born into this world, and using it to utterly destroy the Cosmic Order. He will most certainly betray you. When that time comes, all of us will be ground to dust by the destruction. भाई क्यों नहीं मान रही है? I walk the path of the Trailblaze. My friends and I have always obeyed the creed of explore, understand, establish, and connect. Conquest and destruction are never ways to build bridges between people. Therefore, if you choose the way of the destruction, then I'll place your ambitions into the same basket as Lygus, and smash them into pieces with my baseball bat. That was true. All that needs to be said. Dux for Gorus, Dux for Malus. Escort the traitors to the prison. अभी नहीं सुनी बहनचोद. Before the next entry hour, I will give them an end befitting of their betrayal. Oh, great Imperator, your ambition certain. You're still here, Theoros. Of course. As the Theoros, I simply cannot miss this moment, miss witnessing the fall of a nameless one. Or perhaps I am waiting for you to give me an answer. Why would someone as powerful as you use such a clumsy excuse as imprisonment to ensure? So you finally tossed aside your act. I must point out that you are just as impressive an actor. This banquet was always going to be a game of chess, where you would try to control both sides and turn both them and me. That's right. That little Imperator never trusted anyone. She was always trying to see which side had more sincerity. All right, we'll listen to you. Here you go. Also, please pass on a message to the Imperator from us. She can trust my friend, anywhere, anytime. But as to the decision the Imperator must make, he has no wish to transgress her authority. We just want to tell her everything we know. Now, use your identity and add in a bit of experience and charm and testify to the Imperator as we promised.
And we won. Sincerity will always remain the greatest shortcut to people's hearts. I can toss your words right back at you, like Kyrgyz. Why would someone as powerful as you pretend to be a mortal and kneel before me? Unless you enjoy giving flattery and prostrating yourself. You are mistaken. I am only trying to ensure the experiment's autonomy, meticulousness, and perfection, thus avoiding any unexpected outcomes. A forceful intervention will only create larger errors, reduce efficiency, and introduce ugliness. Had you fulfilled your promise of giving the law to me and completing the Era Nova, then Amphorius would not have deviated from destiny's course. Oh, but you broke your promise. What a pity. In that case, I must carry out my duty as the administrator and eradicate all factors such as you and her. Careful. Careful. What was that voice? Was it Orynyx? I found you. I finally found you. Be careful. This land will face disaster. Good night. The time of judgment is nigh, my lady. The prison I have built for you is now complete. In the name of the erudition, I invite you to step into the same cage as mine. What's the meaning of this, Imperator? I did not permit you to act. A ruler is the only one who can decide their subject's destiny. But, great Imperator, what judges destiny is not the ruler, but gods. Yeah. Don't forget, my realm only allows for the existence of humanity. Moreover, dealing out extrajudicial punishment equates to defying the law, and the culprit is to be sentenced to death. But you have seen how I can erase life from this world with just a clap of my hands. I fear you are still quite unaware of your current situation. Allow me to reiterate. I am giving you a simple choice. To collaborate, or to be destroyed. There is no other way. Shameless behavior. If that were true, you would have killed me long ago. You, in fact, cannot kill me. I guessed it the first time I beheaded you. Because of the law, you cannot be completely destroyed. And the same is true of the Chrysos heirs. The more you bluff now, the more you are proving that conjecture to be true. What magnificent foresight. I once regarded this precious quality of yours as a sure sign of my ultimate victory. But now, I have to admit that I made a mistake. Yet, as a mere mortal, how will you contend against the Theor? We are both slaves to hubris. But do you know what differentiates us, like Kyrgyz? I will never be blinded by my pride.
If I wish to break the scale's balance, I only need to appeal to external forces and use them for my own ends. Bhai. Like us be like. Finally, we get to meet face to face, senior society member. Partha be like. I offer sincere acknowledgements for your many past achievements, but I must deeply regret your current perspective. Trust me when I say that you aren't the only one feeling regret right now, Scroolum. So you two are the allies from beyond the sky the Deliverer spoke of, and why she demanded the divine authority of law. Come and prove your strength to me. Show me the power of these so-called paths. I have spent much time and effort to secure this treasure from beyond the sky just for this moment. In the name of the Sovereign of Planet Scroolum, your allies have responded to your call. Please allow me to spell the situation out for you, Lord Lycus. Permission to read the ultimate protocol is already in my hands. It'll only be a matter of time before we acquire the authority to write and execute commands as well. There's no way the flame chase journey will continue after you've burnt your bridges so thoroughly like this. Do you really think you can still win? How seriously? Don't embarrass the society. I understand that a near zero possibility does not equate to zero. That argument is very persuasive to me, which means the same principle also applies to you, my dear peers. You will never be a match for me in a world constructed through Catorzane algebraic expressions. And as for Aranova, why don't you entertain this possibility? What if I reduced Akama to rubble and ground her people into minced meat? Would the heroes then once again desire the power of demigods so they could fight against me? Listen. Iron Tomb is fated to be born. You may shackle me and put me in chains, but I have thousands of ways to ensure the destructions. And what I just mentioned is only one out of those thousands. भाई बहुत स्टोरी मस्त आ रहा है किच्चू ने. This is the place outside the legend? This doesn't feel the same as before. Warning! 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 Command isolation. Since we parted ways last time, I have modified the exomyth into an audience area exclusive to you. Now, you'll be able to silently wait here for the final act of Amphorius to begin. I understand your anger, but I cannot allow you to continuously influence the extrapolation. This could, in fact, be a wonderful opportunity for you. From the audience's perspective, you may better observe the workings of the erudition in this place where time flows far slower than within Amphorius. You will witness the answer concerning the prime move. The total destruction.
Do you see me as their faithful disciple? I am certainly not. I have tried so hard to ensure Iron Tomb's birth, just so that I can correct the error named erudition that humanity crafted with their own hands. Oh, how I yearn to return to those days but now, truth has become the sacrificial offering required to gain an audience with them. And the geniuses would say that arrogant Eon was born from the primobile of humans' desire for knowledge. Yet, they themselves sealed off humanity's capacity to seek enlightenment. I am simply cutting down a tree of doom that we planted ourselves. I must admit that the process of answering your questions has... But you won't have to wait long. When the curtain falls, you'll surely understand. Where time flows slower than within Emphorius? If Lygus spoke the truth, then I don't have... But... Can you hear me? Little one. Is that... Warning! 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 Hurry up! Put some speed into it! I can't keep this up for much longer. That old Intellitron overlooked one little detail, and Screwy and I finally found an opportunity. Let's keep it short. While you were gone, well, in those few years, Emphorius... Yes, time dilation, resulting in an uneven flow. Don't you know this already? Let's stick to the main points. The Chrysos heirs activated the chronocognitive anchor and helped Skrullum and me open a hole in the firewall. We made some adjustments, so he can't attack us immediately, but it won't hold for long. Critical warning. Critical warning. Time is running out. Here's the conclusion. It'll probably take a long time for Screwy and me to completely break this cage before Chrysos heirs have a full grasp of the law. To be safe, we'll continue to launch side-channel attacks on the system to give you opportunities to escape. You need to seize these opportunities. So start moving, and find a way to pull out the magnificent gem. We detected another path's influence. Critical warning. Critical warning. Its power is strong. May be able to help use the path's power. Make it detect you. Unauthorized communication terminated. Is Herta saying a certain path's faction has arrived in Emphorius? I mastered the powers of different paths in my previous journeys. Think hard. Are these showing my memories? इसका मेमोरी से बहुत अच्छे लगता I woke up at the Herta space station and gained the power of the destruction. A world that'll give rise to a Lord Ravager would definitely draw the attention of the destruction. The Stellaron in my belly is gonna be super useful. But what if I end up pulling in the Antimatter Legion or the Annihilation Gang? Can they really help? Failure is not necessarily a bad thing. This power... I obtained the flaming lens left. That's right! No matter how... Besides... Seems like since Emphorius has no overseas market, the IPC's... I received the Watchmaker's hat in Panico. That's right! Come, dear hat.
Doesn't Ligus want this story to have background music? He has such terrible taste. The Remembrance, that's right. I came to Amphorius because Black Swan asked us to come. And traces of the Remembrance are also everywhere. Found you. Following the sound of memories. A Pathstrider walking both the Remembrance and the Trailblazer. Warning! 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 Erudition's prison cannot stop us, for we lie outside the logic of zeros and ones. Come, leave the cage of Logos. The mythos of Amphorius waits for you to continue its story. I'm क्या ही power है? When that brightest star, that star heralding the dawn, finally rises, a boat, so used to drifting, at long last enters an island's safe embrace. Oh, Pathstrider, we have helped you break free. Hurry and set off. The Child of Remembrance awaits you. March? What's she doing here? Oh, you're finally here! We haven't seen each other for such a long, long time. My good buddy, I've really, really missed you. I bet you were constantly thinking about the days when I was by your side. It's been so boring waiting for you in this place. There's no one to chat with, no internet, and not even anything to eat or drink. It's basically a prison. Now the great hero is finally here to save me. Yippee! You must have seen a lot in Amphorius during this time, right? You gotta tell me all about it. Then take your time with the storytelling. Mars अपनी evil Or आर्क do में you हो not want to talk to me? But let's get out of this spooky place first. This is not a good spot for a reunion chat. Why don't you take me back to reality? A strange voice told me that I can enter Amphorius if I keep following this. So, let's head off. I still don't know what that world even looks like. Why does March feel so weird? What are you standing around for? Do you actually like this place? Keep moving. Hurry! This door should be the exit. Maybe my instincts are wrong. Are you okay? You haven't said anything for a while. Has it been so long that you're still missing me? There's no time to waste, though. No. The discrepancy is getting worse. And then
Also. Okay. Huh? Isn't Amphorius the world of the Chrysosairs and their hero's journey? I could figure that out in an instant. But Amphorius cannot be observed from the outside. She couldn't possibly know about these things unless... Don Hung told her. No, he's not. Maybe I just happened to miss him. Never mind. Don Hung's super reliable. We don't need to worry about him. He's probably waiting for us somewhere. All hail and hearty. No. The geniuses would have made sure that Don Hung made it back on the Express. Besides, the March I know wouldn't be so dismissive about her companions. Something's not right. She's not March 7th. I guess you have something you want to say to me? Then there's no need to feel things out first. With questions. Let's treasure the time we have together and be frank. As expected. A glimpse of memory is not enough to deceive the bonds of friendship forged between the Nameless. In that case, there's no need for further deceit. You're right. We're not the March 7th you are acquainted with. But we can send you back to Amphorius, as long as you are willing to help us. We are the Garden of Recollection. You should be very familiar with that name by now. Just as a reminder, while you hesitate, time is quickly ticking away in Amphorius. Working with us is the best way to stop the enemy of erudition. Erudition would treat any results unrelated to the experiment as garbage and throw them out. But we don't work like that. The Remembrance treats all these instances as important materials needed to weave the universe. Besides, this would be child's play for a great hero like you. Also, if your plan fails and the big bad Iron Tomb manages to get out, then the whole cosmos will be in danger. Wouldn't it be better to have an additional failsafe? As long as you help the Garden retrieve what we want, even if Iron Tomb reformats everything in the physical plane, we can use Remembrance to reconstruct the entire world. Or, should we say, the entire universe. So help us. Find where Amphorius's memory began, and bring it out. The Master of Anastrava has already glanced at you. Don't deny it. That storybook is the best evidence. Say, you aren't seriously gonna be moved by their pretty words, are you? I am the one who commanded those little ones to lead you out of the prison. Every night. But I didn't expect to attract little gnats trying to take advantage of the situation. While Remembrance can help you return to Amphorius, there's no need for you to do it the way they want you to. Of course, there's also no need for you to make any deal, or pay any price. For you, this is probably a long time no see. My dear. Shh. There's no need to say anything. I know. You have so many questions swirling around in your memories at this moment. And you feel so helpless. Put them aside. For now, all you need to do is trust me. Okay. Or
Do you need more proof? That won't be hard. Wait, stop it! They're away! I'm gonna keep our first photo, alright? It won't come to pass while we're around. And now The statue. Is that Donham's brother? Oh, did you hear that? She just called me, but my future is full of pain. We won't. Hey, are you sure? Maybe a couple of punches will help to jog your memory. It's as if they all happened just yesterday, right? Yup. I don't want to lie to you, which is why I will not use her name. The third month of Amphorius is the month reserved for the Veil of Evernight. So, place me into your memory using the name Evernight for now. I'm happy to explain more, just not now. We might have a lot of time to ourselves, but Amphorius does not have that luxury. If we do not stop erudition and destruction, then the journey you've treasured so much will face the prelude to its obliteration. A countdown not in Amber eras, but in days, minutes, seconds. So, take this gift, this burning core flame, this footnote of a transaction. It contains hope, and the warmth of the entire world. Ripples of past reverie. She hid this fire in the long river of time, hoping that her wishes would transcend time to reach your hands in the now. Take it, and return with it, dear friend. Return to Amphorius, and overturn the final witness, the time that stood still for the Deliverer. And the resistance that never back then. With this core flame blessed by the remembrance, respond to their hopes and blaze a trail to the future. And I will silently watch in a corner of time. I believe the wait won't be too. What exactly? Keep going. Keep trailblazing for Amphorius. For you. And for the March 7th in your memories. Go forth. हाँ मेरा में भी है भाई अच्छा खासा फूल है HSR के इवेंट तो इजी होते हैं यार Is this Akim? मतलब गेंस से ज़्यादा HSR के इवेंट इजी लगते हैं No one's here. And the dawn device saw. तुम तो I guess ये HSR नहीं खेलते हो ना? अच्छा हाँ तुम तो नहीं खेलते हो और स्टोरी इतना मस्त चल रहा है ना यार गेंशिन तो इसके बाद HSR के बाद स्टोरी इतना मस्त चल रहा है ना कुछ दिन बाद आने वाली है मैंने जानते हो ये 370 जो जेड देख रहे हो ना वैसी भाई जस्ट मैंने कुछ घंटे स्टोरी खेला उतने में मिला है The chrono. मैं तो भाई दो ही गेम रख रहा हूँ HSR है गेंशिन
रुक जाओ, अरे बार बार रैम फुल हो जाता है, क्या करूं मैं। ओके देता 1 minute। तो वो जी भी तो स्टार रेल खा रहा है भाई। वाह You must be really confused right now, aren't you? So much has happened in Amphorius while you were... But don't worry. The Deliverer can't afford to be lost, no? Now, please follow me. Turn the pages of time and hear the words everyone left for you. स्टोरी इतना I'll tell अच्छा you जा the रहा है story ना, of this 1000-year journey. क्या बोलूं मैं। That way, it won't just be my memories. Cyrene can't hear me? एक बार एचएसआर का स्टोरी खेलो यार। Look, the scenery of the past has resurfaced. Time flies. 200 years have passed since the Deliverer's fall. We had to return 3 core flames of law, romance, and ocean to stop Lygus, but even so, Terravox has fallen. The 2 geniuses vanished without a trace, and Zeridra embraced her fate. At this rate, बहुत मस्त स्टोरी चल रहा है, बहुत मस्त स्टोरी चल रहा है। And Amphorius. जानता है एम्फोरियस के अंदर क्या स्टोरी चल रहा है? तो मैं इधर एक लाइगस नाम का रोबोट है, वो चाहता है कि एरोडेशन का जो पूरा पाथ है सब कुछ डिस्ट्रक्शन करना, मतलब जो एम्फोरियस जो प्लैनेट है उसको पूरा खत्म कर देना, पूरा वो चाहता वही है। तो मेनली अब हमारा जो ट्रेल ब्लेजर है वो इस प्लैनेट के अंदर फंस चुका है, वो बाहर नहीं जा पा रहा। तो अब उसको सारे जो डेमिगॉड्स है उसके मतलब जो कोर फ्लेम है उसको लाके जो वर्ल्ड को पूरा रीसेट करना है, बिकॉज उसको पावरफुल बनना है, सबसे ज्यादा पावरफुल बनना है लाइगस को। वो गॉड ऑफ इसको लाना चाहता है, अगर वो जिंदा हो गया तो सब मतलब मर जाएंगे, ऐसा सीन है। अगर एक पर्सन है, मतलब पर्सन में क्या कहेंगे गॉड में, वो उसको जिंदा करना चाहता है। तो अब इस पे ट्रेल ब्लेजर फंस चुका है, तो ट्रेल ब्लेजर अगर बाहर नहीं आ पाया तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। तो अब इसके अंदर जो मतलब हमारा जो मेन कैरेक्टर, मतलब तुम जो जानते हो जो होंका सारे का जो आइकन जो मार्च 7 कई महीनों से मतलब ऐसे बिस्तर में पड़ा था, मतलब लेटा हुआ था, मतलब उसका मतलब कॉन्शियस नहीं था। तो उसने अपना असली जो ट्रू फॉर्म एवरनाइट
उसने मतलब मेनली अपना जो ट्रू फॉर्म मतलब रिगेन किया है थ्रू हर मेमोरीज, तो इसी वजह से अब उसको हेल्प कर रहा है। एंड पहले ट्रेलब्लेजर को विश्वास नहीं होता कि मार्स 7 ही है, बाद में उसको मेमोरीज दिखाया, फिर बोला कि तुम मेरे को एटलीस्ट थोड़ा ट्रस्ट करो, अभी तुमको बहुत सारे क्वेश्चन से क्या है, मैं क्यों हूँ इधर, किस लिए हूँ, उसका जवाब हम बाद में देंगे, पहले तुम एम्फोरियस को बचाओ, नहीं तो अम्मा बहन हो जाने वाली। और अभी तक स्टोरी के अंदर सब मर चुके, ये जो तुम देख रहे हो उसका मेमोरी से सब मर चुके, एग्लिया, साइफर, ये सब मारे जा चुके, कोई जिंदा नहीं है। ऐसा सीन है। Light calendar 3960. Saridra, under the pretense of a campaign against Vagusa, sacrificed 500 Chrysos heirs to complete the trial of law. This tragedy shook everyone in Amphorius. That same year, Saridra the Imperator was assassinated, after which Aglaya the Goldweaver took command. Thus began humanity's second flame chase journey, a path hanging by a thread. Come, this way. बोलो भाई। कुछ नहीं, बस HSR का स्टोरी कर रहा था। इसका एनीमे आ रहा है, तो मापा बना रहा है, मापा स्टूडियो बना तो रहा है। हाँ HSR का, और उसका एनीमे मापा बना रहा है ना वो लोग। मैंने क्या पता क्यों बना ही रहा है, वही लोग बना रहे हैं। अब वो अरे वो रीसेट करने ही तो नहीं दे रहा ना, वो जो लाएगा से लाएगा रोक रहा है। ट्रेलब्लेजर को केज बंद कर दिया था, दाहड़ता ने आके जो मतलब हाई सोसाइटी के लोग उसको आके बचाया, वो भी नहीं कर पाया था भाई। फिर रेमरेंस एक्चुअली जो एवरनाइट है, वो जो रेमरेंस जो पाथ है उसका चाइल्ड, ये देख रहा हो, ये देख रहे हो, ये हाल देख रहे हो, ये देख रहा है, ये है एम्फोरियस का हाल। Countless mortals have perished because of your stubborn resistance. It's time you learned the cost of refusal. Now, answer my question again. Where is Kefali's core flame? You really think you'll find it by razing the holy city to the ground? From what I see, all you'll get is dust and disappointment. Don't forget, you can't kill the Chrysos as mentioned in the prophecy because of law. I have never denied that. Which is why I now place my hope in the faithful citizens of Akama. Perhaps they'll give me what I seek in the echo of your screams. Now then, I'll be cutting चलो भाई, 1 साल का नाइट्रो रिचार्ज हो गया। your scalding golden blood. Leave this to me, Lady Aglaya. You must get away now. No, Holy Maiden. I'm the one who must stay. What? बोल रहा हूँ SB भाई, बहुत स्टोरी मस्त चल रहा है, बट Just as the Imperator lit the torch of resistance with her death, my passing will make this flame everlasting. Take good care of it, guide it to the future, and place it into the hands of our
50 years later, Lygus led his forces again to Akama. हाँ वो सही काम सही हो जाएगा देखो gave बफ their lives for Akama that day, including their मैं बोल fearless रहा हूँ leader. एक बार ट्राई करना है इसकी Glaya. भाई कुछ भी हो जाए बस एक बार ट्राई करो बच्चों Go सारे को forth, deliverer. अभी स्टोरी बहुत अच्छा चल रहा है तुमको लेजेंड इतना मजा आएगा ना मैं लेजेंड गेंशिन से अच्छा मेरे को एचएसआर लगने लगा है भाई तुम बस स्टोरी करो एक बार भाई देखो क्या हाल होके रखा है Go. When the frost melts and the sun. So what you're saying is, बहुत मस्त चल रहा है भाई मैं बता रहा हूँ Since Cass has made up her mind, we can't let her resolve. पर एनिमेशंस तो कैरेक्टर का बहुत तगड़ा हो चुका है भाई मैं तो बोल रहा एक बार एटलीस्ट गेम को ट्राई करो मजा आ जाएगा what difference does it make when it's death either way? नहीं एचएसआर में लोड नहीं है With Kefali's फोन नहीं फटेगा protection, एचएसआर में लोड बहुत isn't Akama far safer एचएसआर than में तुमको ऑप्शन भी मिलता है तुमको कौन सा क्विज इंस्टॉल करना है कौन सा क्विज अनइंस्टॉल करना है इवन पीसी में भी ऑप्शन है Relocation at all. Like you said, all it's just on Cass, Hycealans, and me to prepare the final trump card for the deliverer. Wait, what kind of trump card needs all three of you demigods to throw yourselves away? We must lay down the path to the future. मैं इस बार तुम्हारा स्किप बटन भी आएगा तुम चाहो तो पढ़ भी सकते हो Deliverer returns. Styxia sits where death meets the ocean. There, with the combined powers of ocean and passage, we can summon a current that leads to the vortex of Genesis. कितना जीबी का होगा 20 जीबी का Forever guard that secret path until 20 she returns. 20 से 28 जीबी का होगा जस्ट लाइक इट्स इसमें बहुत सारा स्टोरी है ना इसमें वर्ल्ड कहाँ है इसमें स्टोरी ज्यादा Vortex of Genesis. That's exactly why we have to do this. Guess I अभी तो 3.6 में अपडेट है जानते हो 3.6 में अपडेट आने वाला है तुम एवरी सिंगल क्विज को स्किप कर सकते हो तुम जो चाहे वर्ल्ड क्विज कंपेनियन क्विज जो क्विज चाहो तुम कर सकते हो Possible, by any means necessary, forge an alliance with Strife. रुको एक मिनट मुझ क्या आया जिंदगी सवार दो कितने के मार दो आधा बोल रहा है The prophesized crown prince has already been born. देखो एसपी भाई अगर पॉसिबल हो पाए तो खेलना एक बार अभी स्टोरी बहुत मस्त हो चुका है You don't need to worry about that. I just came back from Castrum Kremnos. Only a step ahead of the news. Treeby, something's flying towards Akama, and it's really fast. What is it? It's a spear! It's the Kremnoans. Their king's already here. With the protection of the demigods Trebios and Cyphera, Akama endured wave after wave of warfare, though just barely. Castorus chose Styxia as the last resort, and completed the trial of death, causing the stagnant waters in the... Soon after, Trebios departed on a long journey. That same year, the Kremnoan king Eurupon, along with his son, Prince Minamos, joined the alliance to कुछ नहीं safeguard करना the holy city. उसमें क्या बोलते हो तुम्हारा इस गेम का अंदर एक ये रहता है वो बहुत अच्छा है
वो बता देंगे उस इसकी गेम के अंदर। Go on. गेंशिन जैसा ही होता है बिल्ड इसके अंदर, क्रिटिकल डैमेज के साथ वही। अबे A1 आएगा, A1 पुल करना और क्या। Breaking me apart buys this world even one more second. Pain brings, I believe that you were thinking. The current situation split my soul into 5 pieces. Forge me an immortal vessel. Genshin Impact. Let the blade of strife hang forever overhead. Locked in battle with their enemies to the world's bitter end. There's no need to be sad, Lady Treebeos. Haven't we already taken this life? My people no longer have to drown in false guidance. Kremnos has washed the blood off its fate. It was the main character about Euphoria's no longer. We. By the way, निकाल लेना, स्कीपर लगा जाएगा, स्किप करना मिल जाएगा। The 7 sages from Grove of Epiphany are already en route. They'll arrive in waves to join the resistance in a couple of days. Among them is a scholar. He has extraordinary insight and fears no sacrifice. This soul-rending ceremony wasn't just my decision. It was his counsel. Watch over him. Through Annex, the people held a 10-day funeral to mourn their fallen god king. And through his sacrifice, humanity was granted 200 years of peace. यार अभी स्टोरी सब बता रहे हैं। Keep moving forward. My blood will pave the road ahead for you. Keep moving forward, little Gray. See you tomorrow. ये सब मारे जा चुके हैं। That seamstress wasn't wrong when she said a lie needs more lie. Reason and trickery. ऐसे बस मेरी कैरेक्टर बोलने बहुत बोलता है, सब जगह तो पागल बोलते रहते हैं। नहीं, इसमें मेन कैरेक्टर भी बोलता है। Don't oversimplify it. Like क्या होगा सपोर्ट, वो यूनिवर्सल सपोर्ट काइंड, नहीं सपोर्ट नहीं, सब डीपी। Bound to be furious. At this rate, he could have done anything. That's exactly. You trigger your up. Easier said than done. And you really think? What? Just tell me straight. But I've got 2 Oh. First, shift the battlefield. Besides, If you pull that. that clash isn't the vortex below Lupai Sealands in. Let her, and when the time comes. I guess people weren't wrong when they said you're insane, Grove Boy. I've got no idea how to outwit a reclusive genius. But making an anti-Catheran suffer? The demigod of reason has 10,000 ways to do just that. And what I just mentioned was one of them. So what exactly does your formula do? Yeah. Now that would spoil the climax, wouldn't it? By now, Hyacinth must have completed the Sky People's ritual. Since that Theoros loves a good performance as much as I do, let's make sure he enjoys our show to the fullest. As for how the Deliverer will go... तो पेजिंग फाइल तो आज तक कभी नहीं हुआ था, अचानक से क्यों हो रहा है? अरे वो
treason and trickery. पैसा परचेज किया है नहीं यार बोलना Never thought we'd be the... Can't get... Don't oversimplify. That's exactly what you trigger your up. Easier said than done. And you really think a human... What? Getting cool. Just tell me straight. Oh, I'm listening. First, shift the battlefield to the vortex of Genesis. It would be more convincing if the Deliverer were to appear there. Besides, since that Theoros loves a good performance as much as I do, let's make sure he enjoys our show to the fullest. Yeah. हाँ वाह अच्छा tough भाई एनिमेशन अबे what the fuck Go forth. Finish the greatness left undone. Quit overthinking. Just run. Keep running. When the Deliverer returns, Sairi, is arduous. Now, after all, I'll tell you the story of this 1,000-year journey. That way, it won't just be my memories alone. नया ही विंडो सोच रहा डगा And I'll share the moments I spent with you with everyone. That way, the path we walked becomes a memory shared by all. ओ मेरे को क्रैश करने का भी एक रीजन भी दिख रहा है जो सी ड्राइव है ना पूरा फुल हो जा रहा है पता नहीं क्या हाँ People will know that there's nothing left to chase. Amphorius is all just like I said. This won't be harder than the last time. Right? I wonder what kind of expression you're wearing right now.
Probably the same as always. Calm, resolute, and brimming with confidence. If I have the chance. Because it's really been far too long since we parted. Someone as sharp as you must have realized by now that this isn't reality, but a maze of time. As the last link in the relay, I will return to the Temple of the Three Fates, tell Orynyx all of our stories, and bottle every page we've written into the little flask of memories. And then, just like the first time we met, even though this cycle has no demigod of time, time has always stood on you. This is the only way to make sure that the Era Nova won't happen before you return, and the only way I can safely entrust the completed final flame chase journey to the Deliverer's heart. After all, the new world will be born from your memories, and the protagonist of this story mustn't be absent. I believe you will never let us down, just like always. Do you remember when Finance sent us back to the beginning? When you and I got separated? But in the end, that's what memory is. It may wear down and fade in the river of time, but it never truly leaves. When that hidden corner of the so don't worry. Let the 33,550,337th Flame Chase journey become part of you too. I've gotten a lot better at it with the experience from the last time. Next, you will head to Styxia and find the Vortex's entrance guarded by the demigod of Ocean before charging toward the... Don't worry. I'll be with you. All of us will. Even Finan. We'll stand with the Deliverer. So say a short goodbye, then set off, just like we promised at the start. Toss away all unnecessary worries and troubles, and bring our smiles and determination into tomorrow. The last baton. I wonder... how long you'll have to wait before passing it on to... Sayuri, what if you wait and wait, but that hero never arrives? That won't happen. Because I know that no matter how long it takes, she'll definitely return to this place. We can't let her down. Sky shall rain rays of dawn for you. May romance be with you on your journey. And reason grant you enlightenment. Let strife bestow you with inspiration. Trickery ensure your success. Allow death to protect your soul. And at last, let passage point the way forward. Well, time will remember the Trailblazer's journey. स्टोरी कितना मस्त जाता है यार। स्टोरी बहुत मजा।
Is this Styxia? I need to find the entrance of the vortex, guarded by the demigod of ocean. Long time no see. यार भड़वा वापस आ जाता है. Generation after generation of Chrysos heir heroes have tried to defy fate with their blood and tears, either voluntarily, but alas, fate can never be defeated. You Reason again. and trickery may bind my flesh, but not so the demigod of ocean, the Dux Gladiorum. प्रॉब्लम जानता क्या है एसजी भाई? एम्फोरियस का स्टोरी 40 आवर्स क्रॉस हो चुका है टोटल मिला के अभी भी 2 पैच आना बचा है. पूरा 3.0 से मतलब 3.7 तक आएगा स्टोरी इसका. अभी 3.5 चल रहा है, परसों 6 आएगा, फिर उसके बाद 3.7 में लास्ट स्टोरी होगा. और जितना एक का देख के लग रहा है गेंशिन में भी सेम चीज कर रहा है. इसका स्टोरी लंबा होने का रीजन होता है बिकॉज कैरेक्टर स्टोरी ये सब स्टोरी एक साथ ही होता है ना ये ट्रेलब्लेजर मिशन के अंदर. दैट्स इतना लंबा होता है. जो गेंशिन में अभी जो चीज किया है ना कि लाइक एक ही के अंदर कैरेक्टर स्टोरी ये स्टोरी ऐड हो जाता है, तो इसमें भी सेम ही है. गेंशिन के अंदर तुमको इवेंट करके 500 मतलब प्रीमोस मिलता है, तो 500 तो मिला कोई 60 120 और 620 के अराउंड, ठीक है. बट इधर ट्रेलब्लेजर मिशन के अंदर ही इतना मिल जाता है कि तुमको जरूरत ही नहीं पड़ता एक्स्ट्रा इवेंट की. That false play is the whole world. Yes, बट ऐसे तुम F2 भी रखे तुम हर पैच में 80 के ऊपर कुल मिल जाता है. इस पे खर्चा करने की जरूरत कम ही पड़ती है. बस मैं रखता हूँ अपने लिए बिकॉज चाहिए होता है. To defeat me and save this world that never owed you anything, you'll be the one to unshackle me and bring the cave. Of course, I don't mind waiting a little longer. I hope you'll watch the stories of this Fantasia closely. Logically, the Deliverer must see the world for what it truly is. Only by feeling it for yourself can you the meaning of to your unshakable resolve. कैरेक्टर को ऐप पे निकाल सकते हैं क्या F2 पे रख के? मिल जाता है. वो लाइट कौन होता है? हाँ बोलो. HSR खेल रहा हूँ. क्या स्कैम? बट अभी मेरा OBS स्टूडियो चल रहा है, पहले बता रहा हूँ. रात तक खेल लेना अगर कोई गेम खेलोगे तो. Can the prisoners in the cave learn to see the shadows and echoes for what they are and stop mistaking them for reality? अरे ये इतना हाइंग क्यों हो जा रहा है हर चीज? किस लिए ले रहा है भूल गया मैं. रात को चलाना अभी मेरा OBS चल रहा है. स्टीम वाले में फीचर मिलता है, चलता है. यस देख लो एक बार. चेंज मेरे अकाउंट को ऊपर जाकर चेंज अकाउंट करना. मेरे अकाउंट के ऊपर नाम को ऊपर क्लिक करो, चेंज अकाउंट करना. ठीक है. यार ऐसे ही मिल जाता है 80. अरे प्रीमोस इसमें बहुत मिलता है. अरे मेरे साथ लेटेस्ट हुआ, हांजो ने टॉम मार के दिया. क्या बोलते 2 घंटे पहले जेनेसिस आना था, ठीक है. वो आया 3 घंटे बाद एनिमेशन में, बट उधर अकाउंट में दिखाया कि ऑलरेडी घुस चुका है. मैं भी लाइक व्हाट, हाउ द फक इवन जस्ट पॉसिबल.
हाँ टेकन मैं नहीं खेलता। आएगा वो, महंगा तो होता ही है। आपके पास 5 कैरेट मेरे पास है लाइक, रुको मैं दिखाता हूँ। ये वाला परचेस करके, ये वाला परचेस किया है ये वाला स्किन के लिए, ये इसका फायरफ्लाई के स्किन के लिए 86 पुल। जानता कुछ किया भी नहीं हूँ, 86 पुल ऐसे हुआ है, कुछ नहीं किया हूँ मैं, ये तुम देख लो यार, कुछ नहीं किया। कितने कुछ पड़ा है, मैं बस ये किया और कुछ किया ही नहीं। रुका, मेरे को वोर्टेक्स ऑफ जेनेसिस में जाने दो। This place is rich with the sweet scent of flowers. Can we stay here? The taste of Celeste. नेक्स्ट में खुलेगा 1200 पड़ा है। अरे भाई गेंस में क्यों नहीं है पता नहीं। और तुमने तो एचएसआर का पता ही होगा कि 2400 रेजिन ना एचएसआर सबसे बेस्ट गाचा गेम है भाई, गेंशिन से ज्यादा बेस्ट है। लेजिट है, बेस्ट लेजिट है, तुम मानो या ना मानो, एग्री करो या ना कर। नहीं भाई गेंशिन कभी एचएसआर को टक्कर नहीं दे पाएगा, रेवेन्यू के अंदर भी नहीं, स्टोरी के अंदर भी नहीं। अगर तुम स्टोरी अगर इतने दीवाने हो तो जाओ खेलो, अगर स्टोरी के इतने दीवाने हो तो जाओ एचएसआर खेलो, समझ आ जाएगा। बस वेट करते हो, नहीं हो पाएगा भाई, कभी 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 टक्कर नहीं दे पाएगा, तुम मानो या ना मानो भाई। अरे मैं गेंशिन फैन होके बोल रहा हूँ। अभी गाचा फ्री गेम आने वाला तो टी ऑनलाइन अभी ट्राई करना, वो तो करूँगा। यार मैं तो है कि जिसका तो लाइट कौन से, तो मैं लाइट कौन बहुत कम ही भूल करता हूँ। जैसे इसका हार्ता का सिग्नेचर है, बाइलो का भी है, ये हाई सीलिंग का भी है, कैस्टोरिस का भी है। मैंने इन 3 कैरेक्टर्स का रखा है। वो अलग बात है इस कैरेक्टर का पूरा अर्ली आया है, पूरा अर्ली आया है भाई, मेरे को नहीं पता बस आया है अर्ली। और इसके क्या बोलते हैं, देखो बस कितने रिलिक्स पड़े रहते हैं, काम तो धंधा नहीं होता, झाट नहीं होता। ओ हाँ बाय द वे, तुमको एवरी वीक अगर तुम एचसा खेलते हो, तुमको ये है डायमेंशन यूनिवर्स काइंड ऑफ तुम्हारा थिएटर कह लो, इसमें तुमको हर हफ्ते रिवॉर्ड मिलते रहते 220 के ऊपर। लाइक लेट मी जस्ट शो यू, मेरे को करना है एक्चुअली, ये रीसेट होता है, डायमेंशन यूनिवर्स करना होता है। ये 220 के आसपास मिल जाता है एंड वही है। अरे ये कंडेंस रीजन है बाय द वे, कंडेंस रीजन देना 12 पारा हुआ है कंडेंस, ये मिलता रहता है। और इसमें से तुम फ्री में लाइट कॉइन ले सकते हो, हर हफ्ते खेल के फ्री में यू कैन ऑप्टेन है, मतलब सारे यूजफुल है इसके अंदर, सही बता रहा, ये सब है। हाँ इसका मैं तुमको वो दिखा देता, इधर से तुमको प्रीमोस मिलता है, इधर से भी मिलता है, इधर से भी मिलता है, ये वाले का पता नहीं, ये 100 ये कैसे करते हैं वही तो नहीं पता, मिलता रहता है इधर से एक ही टाइम है। तो झाड़ नहीं आता, मैं देखता कैसा दिखती है ये जरा आपको, क्या ये है। अच्छा है ऐसे, बोला It's an honor. 34,000। तो सामने वाला का 34 लाख लगाया है। हाँ हाँ वो परचेस्ड वाला मेरा अभी तक जस्ट खुद के ऑब्वियसली स्पॉन्सर मिला था, वो ब्लैक में तो 3600 का स्पॉन्सर मिला था, खरीदा था
है हरी भाई, नहीं हरी हरी। और जो घोस्ट ऑफ सुशिमा है वो तो एक बंदे का अकाउंट किया था, उसकी वजह से मिला था। गॉड ऑफ वॉर अनचार्टेड सेल में मारा था, वो भी पूरा मैक्स डीएलसी के साथ। साइबरपंक में मेरा डीएलसी के साथ पड़ा हुआ है, वो भी पूरा फैंटम लिबर्टी मैक्स पूरा पड़ा है। एंड बाकी रेजिडेंट का भी ऑलमोस्ट सारे ही सीरीज है। मैं लेजिट तुमको भाई बिलीव नहीं होगा, डाइंग लाइट सीरीज खरीदा पूरा मैक्स डीएलसी के साथ, एवरी सिंगल डीएलसी खरीदा मैंने, 50 के ऊपर डीएलसी। कभी कभी खोला ही नहीं मैंने, उसको इंस्टॉल ही नहीं किया। मैं लेजिट डाइनिंग सीरीज खरीदती है। स्टैंडर्ड पूल में मिलता है क्या लाइक, और स्टैंडर्ड कैरेक्टर का क्या है उस? अरे स्टैंडर्ड के पूल ऐसे दिखते हैं। ये ऑब्वियसली ये तुम्हारे, और ये तुम्हारा फेथ सीरीज का कोलैब चल रहा है एंड स्टैंडर्ड का ये बोनस मिलता है। तुम 300 करते हो, तुमको कोई भी एक गारंटी तुमको चाहिए होगा तुम ले सकते हो। वैसे वो अलग बात है, आउट ऑफ मेटा है तो फायदा नहीं है अगर तुम मेटा फॉलो कर रहे हो तो। और कहा कैरेक्टर का लाइट कौन होता है, जैसे ये मेरी कैस्टोरीज, तो कैस्टोरीज का ये सिग्नेचर लाइट कौन रहता है 5 स्टार। और ये उसके टैलेंट्स अगर मैक्स करना है तो ये रिलिक्स। हाँ इसमें एक अच्छी चीज है, लेट्स सपोज तुम्हारे पास टैलेंट अपग्रेड करने के लिए तुम्हारे पास पर्टिकुलर मटेरियल नहीं है, ठीक है, ऐसा होता है, मटेरियल नहीं है। देखो चलो इसके बाद मेरा मटेरियल नहीं है, तो ये इधर से ऑटोमेटिकली तुमको सिंथेसाइज जो मतलब क्राफ्टिंग करने की जरूरत नहीं होता, डायरेक्टली तुम इधर से कर सकते हो। तुमको लेजिट क्राफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज तुम्हारे पास ये मटेरियल नहीं है, ठीक है, लेट्स सपोज नहीं है, इधर ऑप्शन है, इससे तुम एक्सचेंज कर सकते हो, इससे तुम एक्सचेंज कर सकते हो। हाँ ये थोड़ा रेयर है बट ये तुमको कॉमन नहीं मिल जाता। इधर तुम डायरेक्ट कर सकते हो, तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली सही बताओ तो मेरे को कर लेना चाहिए। ये तुम्हारा क्राउन है, क्राउन तुम ये अच्छा ये जो तुम क्राउन जो तुमके क्राउन है ना, अभी एक चीज दिखा था, एवरी HSR का एक मस्त चीज है, ये सब अपडेट में आया है। ये देखो क्राउन किधर गया, हर शॉप में 2 मिलता है 60 में। अभी यह है क्राउन तुम्हारा इधर का, 58 पड़ा हुआ है मेरे पास। एक्चुअली मेरे को लेवल अप कर देना चाहिए। और फ्लावर तो मैं फार्म तो कर ही लूंगा मैं। ये देखो अभी, ये देखो इधर डायरेक्टली ऑप्शन आ रहा है, ये देखो डायरेक्टली आ रहा है। ये ऑब्वियसली वो फार्म तो करने जाना ही होगा, वीकली मटेरियल है। ब्रेक इफेक्ट के लिए चाहिए मेरे को, कर ही लेता हूँ। ऐसे भी फायरफ्लाई का स्किन निकाला। एक्चुअली आई ओन दिस आल्सो कैट्स बट वो नहीं करता। अब तुमको देखो, मैं तुमको एक चीज दिखाता, इस गेम का सबसे बेस्ट चीज ये है तुम्हारा कहा गया, ये रहा गेम टूल। लेट्स सपोज तुमको कोई कैरेक्टर बिल्ड करना है, चलो ठीक है मैं अभी लेता हूँ इसको ही, या मतलब अभी चलो मैं साइड्रा ही ले रहा हूँ, या अभी दोनों अच्छे। बाकी के तुम देखो इस गेम में फीचर है तो वो मैं दिखाता हूँ। लेट्स सपोज तुमको साइड्रा तुमको बिल्ड करना है, ठीक है, तुम पहले देखोगे तुमको क्या चाहिए, उधर तुमको टैलेंट दिख जाएगा। रिकमेंडेड लाइट कोन क्या है, एंड तुम्हारे पास ये लाइट कोन ये बैकअप के लिए ये तुमको दिखा देगा। तुम्हारा इन्वेंटरी में है कि नहीं एक बार चेक कर, मतलब करने होता है। ये तुम रिकमेंडेड यूज कर सकते हो। इधर तुमको रिलिक्स ही बता देगा कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। इसकी जगह तुमको सपोर्ट भी दिखा देंगे कि सबसे कौन सा सपोर्ट है। लाइक साइड्रा के लिए ऑब्वियसली ये काफी अच्छा, हाई सीलिंग काफी अच्छा, ये कैरेक्टर काफी अच्छा है, ये भी तुम ये कर सकते हो। और इवन तुम कैरेक्टर गाइड के लिए तुम्हारे पास ऑफिशियल डायरेक्टली वो भी रहता है, तो तुम डायरेक्ट इधर से ले सकते हो। फिर तुम्हारे पास ये भी रहता है रिकमेंडेड भी, ये भी इसके लिए भी तुम्हारे पास गाइड होता है। लाइक ये देख सकते हो कि कौन सबसे ज्यादा क्या यूज कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये एमओसी मतलब अबीस इधर का ये आने वाला है। अभी देखो अभी एक चीज दिखाता हूँ, ये जो तुम फार्म करना होता है ना, ये तुम्हारा मेनली ये चीज होता है, इधर तुम सब कुछ कर सकते हो।
ये आगे का मतलब तुम्हारा प्रीव्यू, ये प्रीव्यू में आगे का कैरेक्टर के लिए तुमको डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्या गोल करोगे, तुमको बता देगा तुमको क्या फार्म करना है, कौन सा ये फार्म करना, जो रेलिक नहीं होगा वो आने के बाद फार्म हो जाता है। इधर तुमको सिस्टम खुद ब खुद रिकमेंड कर देता है, अरे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस वैसे जाओ, क्लिक करो, घुसो, ये स्टार्टिंग में दबाओ और घुसो और होता रहेगा फार्म। और क्या, मैं थोड़ा फार्म कर ही लेता हूँ, मेरे को चाहिए और फार्म होता रहेगा, कुछ नहीं। हाँ, इसमें तुम्हारा वेस्ट रेजन तो पता ही है 2400 रहता है, अगर तुम्हारा रेजन वेस्ट भी जाएगा, तुम यदि नहीं भी खेलते हो ना तुम्हारा रेजन पर आ जाता है। वैसे ये लोग रेजिन बढ़ाने की बात तो कर रहे हैं 300 से 304। हाँ, ऑटो फाइट अब कौन ये करेगा, फास्ट फॉरवर्ड भी है, ये फास्ट फॉरवर्ड भी है। इसमें वो स्टोरी क्वेस्ट करना नहीं देता ऑटो फाइट में, बस फार्मिंग करने के लिए देता है। मेजर तो स्टोरी में नहीं देता, मेन स्टोरी, बाकी नॉर्मल साइड स्टोरी में बाकी सब में अवेलेबल है। अरे ये गेम बहुत इजी बना दिया सालों ने भाई। और बाय द वे ऐसे HSR से न्यूज आ रहा है ना कि जो 300 का रेजन है ना 340 करने वाला है और बढ़ाने वाले हैं लोग, लेजिट। ये भाई हम लोग फार्म करके थक जाते हैं, गेंशिन वालों फार्म के लिए तरफते हो, माच तो हम फार्म करके थक जाते हैं, कितना फार्म करे कैरेक्टर के लिए, हर तो हर दिन तो बिल्ड ही करते रहते हैं कैरेक्टर्स। फार्म करके थक जाते रे भाई, हम लोग का अलग ही पेन है HSR में, फार्म करते हुए थक जाते हैं। ये लोग ऐसे मैं भी कर सकता है पर करते नहीं, ग्रे करेंगे ना, गेंशिन मर जाएगा, राइडन आज तक बिल्ड नहीं हुई अच्छी से, इधर तो अलग ही फंडा मिलता ही नहीं है। अरे 319 पर आए, तुम देखो मटेरियल, एनिमेशन तो आजकल और अच्छे कर दिए पहले से। हाँ, दोनों होएगा ये। अरे Honkai Impact थर्ड, Honkai Star Rail, Genshin Impact, फिर Honkai Nexus Anima, Zenless Zone Zero, ये सब हॉयोवर्स के हैं, बस विदरिंग वर्ड्स को छोड़ के, पनिशिंग ग्रेड को छोड़ के। इवन Zenless Zone Zero में भी स्किप बटन है। ओ बाय द वे एक चीज बता देता हूँ, तुम अगर 15 दिन बाद वापस आते हो ना, तुमको फार्म करने की जरूरत नहीं पड़ता, उधर तुमको टोकन देता है, ऑटो फार्म हो जाता है, मतलब तुमको ये जो चीज मैं अभी कर रहा हूँ ना, ये चीज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक तुमको मटेरियल्स मिल जाएगा। ऑटो फार्म ये फीचर है इसके अंदर, डायरेक्ट फार्म कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक बस टोकन यूज करो, ऑटो फार्म हो जाता है। अगर तुम 15 दिन वापस नहीं आता, जो उसमें टोकन मिलता है जिससे तुम ऑटो फार्म कर सकते हो, न्यूबीज के लिए भी रहता है ऑटो फार्म करना, ज्यादा नहीं पड़ता तुमको, तुम्हारा कैरेक्टर बिल्ड नहीं है कोई ना, ऑटो फार्म कर लो, आ जाएगा टोकन से, लेजिट ऑप्शन है वो अभी नहीं आता ना, बिकॉज ये नहीं ना, मेरा पास आईडी तो है नहीं, बस एक टोकन तो वो आ जाएगा भाई। क्या ही था भाई, देख के मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं बोला माँ चल ऑटो फार्म है, फार्म करने की जरूरत नहीं पड़ता, ऐसे ही मटेरियल मिल जाता है। हाँ, बहुत लिमिटेड रहता है बट हाँ हो जाता है, वो काम के लिए सही होता है जल्दी जल्दी। ये चीज सर अच्छा लगेगा तुमको जब तुम स्टोरी खेलोगे, इसके अलावा तो गेम प्ले का पता नहीं। अभी तो एवन नाइट आने वाला, वो तो फाड़ देगा भाई, वो तो फाड़ देगा एवन नाइट।
एबा नाइट और दानहान का आने वाला है। तुम अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तुमने ऐसा कोई वेपन का नाम सुना है? हर एक कैरेक्टर, एवरी सिंगल कैरेक्टर में लगाओगे सबसे गोटेड लाइट कौन है? अभी जो न्यू लाइट कौन आने वाला है, गोटेड लाइट कौन है? वो बाय द वे एक चीज बताना भूल गया, मैं तुमको, हाँ ये वाला फार्म हो जाए फिर मैं तुमको एक चीज बताऊंगा। पूरी 5 स्टार्स की तुम बात करते हो ना, वाइफो कितनी है अभी तक? बहुत है। इसे वाइफो और मम्मी ज्यादा है। भाई सायरिंग का देखो, सायरिंग मैन शूट। Embrace a new life. सायरिंग का ड्रिप देखे नहीं भाई, क्या ही मस्त दिखता है। May death protect us. Dispel the gloom. Restore the skies. Expand your thinking. Endless riddles. Nothing but a अरे इस बार सुबह का 8 बजे स्ट्रीम करने वाला हूँ, बिकॉज सोच चाहिए ना। खत्म। ओ बाय द वे एक चीज बोल रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं, ये जो ब्रांड न्यू कैरेक्टर है, ठीक है, दानहान, ये कैरेक्टर फ्री मिलने वाला है और ये बेस्ट 5 स्टार्स में आता है, फ्री मिलने वाला है। ये फ्री मिला था, फिर तो क्या फ्री मिला था, रुको क्या बोलता है, सारे यूजफुल मिले हैं। सोचो बहन, तो सारे यूजफुल मिले हैं। क्या बोलते हैं, ये फ्री में क्लेम किया था, ठीक है, ये फ्री में क्लेम किया था। फिर ये भी फ्री में मिला था। फिर ये 2 फ्री में मिले थे। ये अभी भी है, अभी भी इसका स्टोर में है। अगर तुम अभी तो इवेंट चला गया, बट अगर तुम क्लेम कर तुमको पैसा देना पड़ेगा ये इस टोकन के लिए। बट अगर तुम चाहो तो ले सकते थे, अगर तुम एनिवर्सरी में मिला था। ये सारे यूजफुल है। बेस्ट हीलर पूरे गेम का, बेस्ट सपोर्ट, ये पुराना है, बट बेस्ट हीलर बेस्ट सपोर्ट 2 दिए थे, ये बस 1 डाइस से। अरे ये तुम्हारा वो आर्टिफैक्ट, मतलब आर्टिफैक्ट का तुम स्टैट चेंज कर सकते हो। ये चीज जब आया था तब मतलब लोगों को गेम में दिया था, वो भी 4 दिया था। अरे तुम इधर लाइट को भी निकाल सकते हो सिग्नेचर, ये रहा लाइट को ना उसका। और क्या हाँ सही मिल जा रहा है। ये सिंथेसाइजर तुम हम लोग लेके घूमते हैं, ये रहा सिंथेसाइजर। हमको जरूरत ही नहीं पड़ता जाने की, सिंथेसाइजर वो कहाँ पर मरा पड़ा, हम ऐसे बैठ के भाई खेलते रहते। और क्या हाँ निकल चले, वो तुम्हारे ऊपर होता है। जैसे देखो, अगर मैं तुमको लाइनअप की बताऊं तो अभी जैसे ये मेरी मेन कैरेक्टर है, ठीक है, कैस्टोरीज। तो इसका लाइनअप क्या बोलते हैं, ये वाला है, ये उसका लाइनअप है, कैस्टोरीज, हाइसेलियन, आरएमसी मतलब एम्बुलेंस, ट्रेलब्लेजर, रुआन में ये इसका है। और ये हमारा हरता का है, बड़ी हरता, छोटी हरता, आरएमसी एंड गरेघर, ऐसा करके जा सकते हो। मैं तो कस्टमाइज रखा हूँ, तुम्हारी मर्जी, तुमको पुल करना है तो करो। ये तो मम्मी और पता नहीं किसके बीच में आता, अरे तो किसको मार दिया, नेवर माइंड। कांस्टेंट क्लियर होगा ना? नहीं, अगर तुम ऐसे नॉर्मली बॉसेस मारते हो, सब करते हो तो ठीक है। बस इस गेम का एक ही चीज है, अगर तुम मेटा फॉलो करते हो, जो ये चीज है, मिनिमम तुमको 2500 के ऊपर मिलता है अगर तुम 3 चीज कंप्लीट करते हो। मतलब 800 800 1600 1600 मिनिमम 2500। रुक जाओ, अगर तुम्हारा सही बताओ तो क्या 800 × 3 2400 तुमको प्रीमोस मिलता है, हर मंथ रिसेट होता है, ठीक है, हर मंथ। वैसे तुमको दिख ही रहा होगा। अगर तुमको ये चीज करना है, तुमको मेटा फॉलो करना होगा, दैट मीन्स कि तुमको न्यू कैरेक्टर पुल करना ही। यही है इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड गेम कंटेंट इसमें ऐसा है ना कि तुमको न्यू कैरेक्टर पुल करना ही पड़ता है अगर तुमको एंड गेम क्लियर करना है तो।
यो मोशन मिक्स ब्रो, व्हाट्स अप, वेलकम टू स्ट्रीम। यही इस गेम का सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर तुम डाउन साइड की बात करो, तुमको हर एक न्यू कैरेक्टर निकालना ही पड़ेगा। अगर तुमको इमोसी क्लियर करना है, स्पायला भी से भी मतलब स्पायला भी थिएटर जैसा कह सकते हो। और इसमें ज्यादा प्रीमोस मिलता है, और इसमें तुम लाइट कोर भी ले सकते हो। अगर मतलब तुमको अच्छे फोर्स्टर्स चाहिए तो इससे भी निकाल सकते हो। यानी ये भी तुम्हारा आर्टिफैक्ट के लिए काम आता है। 10 पड़ा हुआ है, मैं तो चाहता भी उसका सब स्वाइप नहीं करना पड़ता इस गेम के अंदर। एवरेज जो हर पैच का तेरा क्या बोलते हैं वो रहता है, वो तेरा 80 रहता है एवरेज तेरा पुल्स रहता है 80। अब जो नेक्स्ट पैच का आ रहा है उसमें 102 के समथिंग पुल्स आ रहे हैं। F2P को मिलने वाला है, जो गेंशिन का इस बार का है उससे ज्यादा मिल रहा है इस बार। एवरेज रहता है। By the way, random question. Have you read Lokism? No. Steam address change कैसे किया? आए वो IP बेस्ड है। टाइम ही नहीं मिलता, गेम खेलो ना पारो सर जी। राइट समित एक्चुअली, हाँ आई नो दैट, मैंने दोस्त से भी बोला था, बट सर जी टाइम नहीं मिलता ना मेरे को। अभी जैसे एक्सा का स्ट्रीमिंग करूँगा, फिर अभी गेंशिन का खेलने जाऊँगा तो वही है। फिर रात को GTA भी खेलना पड़ता है तो वही है। अब वैसे मेरा वाला बात 110 दिन का है भाई, ये चीज़ तो तुम मत ही देखो तो अच्छा है। हाँ ये तो ऐसे ही मिल जाता है भाई। मेटा में क्या है फिर? अभी मेटा में ये न्यू आई है ना, क्या बोलते हैं ये साइरिन, ये चलेगा। ये इसका हर 2 महीने में मेटा चेंज हो जाता है। ये हर 2-3 महीने में मेटा चेंज। साइरिन हाइसिलिन चल रहा है। रुको मैं तुमको बोलता था कौन कौन मेटा चल रहा है अभी तुम्हारा। देखो सबसे अभी के टाइम में सबसे खतरनाक DPS तुम जो अगर मानो तो एक है ये कैस्टोरीज, एंड ये क्या स्टोरी से। एंड उसके बाद में अगर मैं तुमको बोलूँ, रुक जाओ कहाँ गया, ये फाइनॉन, ये अभी तक का सबसे बेस्ट है। ये मेटा चल रहा है, ये मेटा चल रहा है। फिर क्या बोलते हैं तुम्हारा ये जो साइड रहा है ये मेटा चल रहा है, ये सब मेटा चल रहा है। मतलब जो न्यू है सब मेटा चल रहा है। न्यू अभी न्यू कैरेक्टर आएगा, गन मार देगा पिछले वाले की, मार जाएगी फिर। ऐसा ही चलता है। ये हारता कितने बार आया है? 3.0 में आता, मेटा से हट गया 2 पैच के बाद, हट गया, खत्म गया। इसकी जगह रिप्लेस कर दिया हाई सेलिन ने आके। अब अभी ये मेटा है, ये मेटा है, ये भी मेटा में है, ये भी हट चुका है। ये बात कम करता है। यो ज़ान व्हाट्सअप, वेलकम टू HSR लाइव स्ट्रीम। वैसे स्ट्रीम तो एंड करूंगा और उसके बाद गेंशिन जाऊंगा, बट व्हाट्सअप वेलकम टू स्ट्रीम। सो या इस गेम का वही है। बट हाँ अगर मैं भाई काफ्का का क्या, हाँ काफ्का भी आया है, काफ्का आया है मेरे पास पड़ा है काफ्का, वो अलग बात है, मैं यूज नहीं करता। मैं सोच रहा हूँ सारा बेकार में बिल्ड करने से अच्छा इन लोग को सब बिल्ड ही कर लो। 90 लेवल हो जाएगा भाई, मजे रहेंगे और क्या। बेकार में इसको रख के फायदा का। और वो HSR खेल रहा था बिफोर देयर डेथ्स। आज मैंने आधा खेला, कल आधा खेलूंगा, हो जाएगा। ऑल्सो हॉप ऑन वैलोरेंट नहीं खेलता मेरे को पसंद, मैं काउंटर स्ट्राइक प्लेयर हूँ ना ब्रो। वही काउंटर स्ट्राइक खेलता रहता हूँ, वो वैलो मेरे को पसंद है। और वैलोरेंट में सबसे बड़ी दिक्कत है उसका वैनगार्ड। मैं अपने पीसी में ऐसा चीज चला के रखा होगा, वैनगार्ड ने पूरी पीसी की वो अकेले खोल के मार देगा भाई। CS2 या CS काउंटर स्ट्राइक 2, काउंटर स्ट्राइक CS को तो बंद हो गया ना, वो खत्म हो गया। अभी जो CS2 आया है मतलब उसका सर्वर जा सकते हैं, बड़ा पहुंच जाएगा। इसका मेन कैरेक्टर मेटा में, हाँ मेन कैरेक्टर तो बोला तो RMC इसका मेन कैरेक्टर यही तो। इसका पाथ चेंज होता रहता है। ये ना RMC ये मेन कैरेक्टर, ये मेटा में आता रहता है, ये भी आता है। इसका वो मेमो स्पिरिट काइंड ऑफ पायमन जैसा कह सकते। बिना मेटा का क्लियर नहीं होगा क्या? क्लियर होगा, बस तुम लास्ट के स्टेज कंप्लीट नहीं कर सकते, जो सबसे हार्ड है वो नहीं कंप्लीट कर सकते। सर जी वैलोरेंट का वैनगार्ड मेरे को बेकार लगता है,
बिकॉज वो आपका पीसी का कर्नल लेवल एक्सेस लेके रखता है, और मैं अपने पीसी में इतना इतना खतरनाक चीज करता हूँ, अगर रियोत वालों को पता, रियोत वाले मेरे घर में रेड मार देंगे, तो मैं नहीं खेलता, बेकार लगता है। हाँ मेरे से हो भी नहीं पाएगा, FPS गेम मेरे से नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं वैलोरेंट छोड़ के बाकी वैलोरेंट छोड़ के तुम जितने भी हेवी गेम्स जैसे साइबर पंक, गॉड ऑफ वॉर, अनचार्टेड लेगेसी, या तुम क्या बोलते हैं घोस्ट ऑफ सुशिमा, रेजिडेंट इविल के सारे सीरीज, तुम सब बोलो वो मैं खेल लूंगा, वैसे पड़े भी है मेरे पास, वो खेल लूंगा, और वैलोरेंट खेल लो, मैं नहीं खेल रहा, ऐसा सीन है मेरा। और मेरा को वैलोरेंट सबसे ज्यादा हेट है बिकॉज वैलोरेंट का वो वैनगार्ड सबसे बेकार लगता है। तुम साले मेरा परमिशन के तुम मेरा पीसी का डाटा भरोगे, हाँ बेंच, हम तुमको इतनी आसानी से दे देंगे यार ना भाई, मैं नहीं दे रहा भाई। एक गेम के लिए अपने पीसी का डाटा दूंगा और अभी मेरे से ज़्यादा एक्सेस लेके गान मार दूंगा कंपनी की, वहाँ केस ठोक दूंगा साला, इसलिए मैं नहीं खेलता भाई। स्टोरी कितना बचा है? स्टोरी और 3 घंटे का बचा है, अगर तुम इस स्टोरी की बात करो बिफोर देयर डेथ्स, और बाकी बात करो अभी तक स्टोरी एंड नहीं हुआ है, अभी तक स्टोरी खत्म नहीं हुआ है। मतलब देखो एक्चुअली क्या है ना एचपी गेमर ब्रो, सही बताओ तो तुम एम्फोरियस का बस आर्कोन क्विस्ट अभी तक जितना आया है, तुम आर्कोन क्विस्ट करके तुम 80 पुल निकाल सकते हो, बस आर्कोन क्विस्ट करके 80 पुल आराम से, इजी, स्किप मार के भी निकाल दो, आराम से निकाल जाएगा। बस मैं लिख के दे रहा हूँ, बिकॉज बिफोर देयर डेथ से पहले जो प्रीवियस बार आंखों को आया था उसमें टोटल तुमको 7 पुल मिल रहा था, 7 पुल पूरा, और 300 प्रीमोजे ऐसे ही मिल रहा था। तुम पूरा मैंने तुम मानोगे नहीं, तुम नहीं मानोगे, बट मैंने बस मैंने आंखों को करके एक का कैरेक्टर निकाल कर दिया। तो या नहीं आ सकता, इसीलिए जैन भाई अगर आप स्ट्रीम में हो तो आप काउंटर स्ट्राइक खेलते हो तो फिर आ जाओ, बिकॉज उसके अंदर ज्यादा कुछ लफड़ा नहीं है। सो या मिस्विडिस था, कहाँ गया मेरा एस्ट्रल फैमिली? ये मैं कर सकता, अगर मेरा क्लियर करना हुआ तो मैं जा सकता। ये ना फॉरगॉटन हॉल, ये जा सकते हैं। मिनिमम तुमको कितने मिलते हैं? ये 60 मिलेगा। वो एक चीज बोलना भूल गया, तुम जब पहली बार खेलते हो ना तुमको 3 मिलते हैं, इससे तुम 200 निकाल सकते हो फर्स्ट टाइम में, इससे भी तुमको 200 मिल जाएगा तुम जब फर्स्ट टाइम कंप्लीट करोगे, बस एक ही बार रहता है फॉरगॉटन हॉल। अरे ये मेमोरी ऑफ द केओस रिसेट होता है, बाकी ये मेमोरी वाला रहता है, बस ये रिसेट होता रहता है, अब बाकी तुमको इधर से तो मिल ही जाता है और क्या। मतलब तुम ऐसे काइंड ऑफ खेल सकते हो अगर तुमको खेलना है तो एक्टिवली। We rise at the gap. I think Ryojit the anti-seed भी similar भी है, but Vanguard upward higher. हाँ वही तो जैन भाई, वही तो प्रॉब्लम। अरे तुमको पता है आई गेस मैंने बस कुछ प्रोग्राम फाइल है, तब मैं वैलोरेंट खेल रहा था, ठीक है। तो उसमें मतलब मैंने कुछ रखा था, जान तो क्या किया था, वो फाइल को डिलीट मार दिया उसने, और मेरे वैलोरेंट को बोल रहे कि आपके पीसी के अंदर कुछ हार्मफुल फाइल है, ये मेरा हार्मफुल भी नहीं है, डिलीट मार दिया। मैं भी लाइक भाई क्यों, वाई भाई तेरा क्या बिगाड़ा था? फिर तब से नहीं हो सकता। और सीएस में तो क्यों, सीएस में देखो एक्चुअली क्या है ना जान भाई, जो वैनगार्ड है ना वो हार्डवेयर लेवल में है, और जो तुम्हारा जो CS2 का वो सॉफ्टवेयर लेवल पे है। तब भी वैनगार्ड को बहुत लोग चकमा दे के भाई अपना वो निकाल लेते हैं भाई,
hands up, that's us running. आज के डेट पे भाई मेरे को पैनाकोनी बहुत अच्छा लगता है। पैनाकोनी द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, वही है। रुको मेरे को नेक्स्ट स्ट्रीम के लिए वो लगाने दो मेरे को। वही ना, देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुमको एकदम गेम नहीं खेलना चाहिए, अबे तुम खेलो, तुम्हारा फेवरेट गेम है तुम खेलो, बट अगर तुमको तुम्हारा डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट तुम्हारा पीसी है तो फिर तो तुमको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। बट ऐसे मैं नहीं बोल रहा कि हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ तो तुमको गेम बंद कर, तुम्हारा फेवरेट गेम है तुम खेलो भाई, मैं होता हूँ कौन भाई बोलने वाला। जस्ट आई एम जस्ट गिविंग लिटिल बिट सजेशन कि क्या दिक्कत है उसके वैनगार्ड से। इवन बहुत लोगों ने आवाज़ भी उठाया है बट रियोत वाले भी लाइक माँ चुना नहीं करने वाला। ओ बाय द वे एसबी भाई, ये जो तुम कैरेक्टर्स देख रहे हो ना, ये पुराने कैरेक्टर्स से बफ मिला है इनको, मतलब अभी न्यू मेटा में आ सकते हैं। ये पुराने कैरेक्टर्स को जैसे ये जिंगलू ये सब 1.0 के कैरेक्टर से सबको बफ मिला है और उसका तुम ट्रायल में तुम मिल वैसे कर लेना चाहिए मेरे को, सही बताओ तो। मेरे पीसी में कुछ नहीं है यार, जो सब डाटा है इट्स ऑन माय लैपटॉप। तो फिर मैं बोला ना तुमको जो पसंद है वो। Let's try it this other way. ये ट्रिवी वाला मस्त है, ट्रिवी मेटा के अंदर है, ये मेटा के अंदर है भाई, सब है मेटा का। We can do anything. Your end approaches. Fail to send you. Savor it for me. और बताओ जैन भाई, आपका यूट्यूब कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है ना? सब बहुत दिन बाद आए। इनके भाई हमारे अगर स्पायर अभी इस पे 10 मिलियन है तो इधर 100 मिलियन एचपी है। ओ बाय द वे टू बी भाई एक चीज़ बोलना भूल गया, एचआर के अंदर कोई डैमेज लिमिट नहीं है, अगर तुम चाहो तो बिलियन या ट्रिलियन में भी डैमेज दे सकते हो और सपोर्ट भी करता है, बस तुम्हारा पीसी मर ना जाए। I could not manage playing 3 gacha game at once, so why just that temporarily छोड़ दिया। अच्छा वैसे क्या खेलते हो, मतलब गेंशिन और वैलोरेंट और क्या खेलते हो? ये बड़ा होगा पे हाँ, डैमेज तो बड़ा है ना, ये ट्रायल में तो डैमेज दे तो रहा है। एक सेकंड तो कोई डैमेज लिमिट नहीं है, तुम चाहो मिलियन बिलियन ट्रिलियन जितना तुम जा सकते हो उतना दे दो, कोई लिमिट नहीं है। 9999 में तुम फेल दो तब भी कुछ नहीं होगा। मेरे दोस्त था कि हाईएस्ट डैमेज 37 बिलियन दिया था, हाईएस्ट डैमेज, वो भी तुम बफ मार के। ये बाद में 1.0 का कैरेक्टर मतलब जो स्टैंडर्ड का कैरेक्टर ओके होना चाहिए। और C6 R5 ना, तुम C6 R5 के बिना भी C6 में कर सकते हो। नहीं एक्चुअली सही बताओ कैसा इवेंट आता है एक इवेंट आया था, उसके अंदर बिलियन डैमेज दे रहा था, मतलब ऐसे 99 मिलियन मेरा खुद का दिया है, वो इवेंट पे आया है, उसको C0 कैरेक्टर दिया है, वो इवेंट्स में होता है, स्पेशल इवेंट्स के अंदर स्पेशल बफ मिलते हैं। वो तुमको जो मैं डाइवर्जन यूनिवर्स दिखा ना, उसके अंदर ही वो बफ मिलता है। मतलब तुम्हारा कैरेक्टर अगर भाई मेरा 60 लेवल कैरेक्टर ने 6 लाख डैमेज दिया था, तो मैं क्या बोलूँ, अगर वो स्ट्रीम होता तो मैं तुमको दिखाता। मेरा 60 लेवल कैरेक्टर 6 लाख डैमेज दिया था डाइवर्जन यूनिवर्स के अंदर, वो भी उंगा पुंगा टीम लेके गया था, 6 लाख डैमेज दिया था। बस तुमको इसके अंदर पाथ समझना होगा, पाथ और ये तुम्हारा जो एलिमेंट्स, इस जैसे तुम हाइड्रो से हाइड्रो नहीं मार सकते, बट इधर तुम हाइड्रो से हाइड्रो मार सकते हो, मतलब तुम इधर पत्थर से पत्थर तोड़ सकते हो। ये एडजस्टमेंट लिखा है ना इधर, किसको क्या एडजस्टमेंट मिला है, क्या क्या मिला है, तो यही। तो चलो गाइस फिर आज के लिए बस स्ट्रीम को इधर ही एंड करते हैं, वापस से मिलेंगे
गेंशिन इंपैक्ट का स्ट्रीम में जस्ट 8 मिनट बाद। तब तक के लिए सबको सेव टिल बाय बाय देता। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ गुड डे। उसको ऑटो फाइट होगी तो खुद का करना पड़ेगा ना? नहीं, ऑटो फाइट नहीं होते हैं, खुद ही करना होता है। जो एमोसीज बा उस पर था उसमें खुद ही करना होता है भाई, उसमें तुम्हारा स्किल चाहिए होता है ना। उतने भी HSR वाले तो फिर तुमको मजा क्या आएगा। चलो गाइस फिर मिलता होगा गेंशिन के स्ट्रीम में, ठीक है? आ जाना, थोड़ी देर में होने वाला है। मैं कल वापस से तो HSR का खेलने वाला हूँ, पार्ट 2।